coming? Okay. I'll just get it done first. Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you for the day 2 of the 5th edition of Bodh Gaya Global Dialogues. To begin with session 1, we have conversation with Dr. Shobna Narayan with Shri Uday Sahai ji. Dr. Shobna Narayan, a name synonymous with Kathak, is a celebrated outstanding doyen of this art form. Dr. Narayan has been awarded the prestigious Padma Shri Award in 1992 and the Sangeet Natak Academy Award in 2001. She is also the recipient of over 30 national and international awards. They include the Delhi Government Parishad Samman, the Japan Oiska Award, Bihar Gaurav Award, to name a few. Right. Bihar Gaurav Rashtriya Samman, to name a few. Shri Uday Sahai has emerged over one last decade as one of the foremost communication professionals in India today. A voluntarily retired IPS officer of the Union Territory cadre, Sahai's 10-year stint as head of different communication organizations in government, Prasar Bharati, Delhi government, Commonwealth Games, converted a baton fielding police officer of 12 years standing into a pen-holding communicator. He has been communication advisor to several organizations in India, such as UIDAI, ONGC, InLead, Sangeet Natak Academy, Doordarshan, etc. Currently, he is the managing director of a communication management company, Sov Communications, and chairman of a soft skill training company, Bodhi Tree. I welcome you both to please be on the dais. And the floor is yours. Hello. Good morning to all of you. This is the first session, technically speaking, after the inauguration ceremony took place yesterday. So first of all, let me compliment and congratulate our old friend Sanjay Kumarji and Deshkal Society, the entire team, for having put up such a beautiful show in a remote place like Gaya. Year after year, it's not an easy exercise. So we salute his tenacity and perseverance, and we hope that we all contribute our widow's mite to the endeavor. That's how every year we try joining it, and this is the third time that I am joining. So thank you so much, Sanjay ji, on that. Well, we are going to discuss today a very interesting or rather controversial topic regarding Buddha's
view on gender equality. And there's no one view finally emerging. There could be, contradiction between what is postulated and what exists in reality. Yet, it is important to know first the historical context where this whole debate started. If we go back to Vinay Pitaka, there is an interesting reference in a source called Chul Vagya. In this source, they have spoken about a place called Kuthaghar Shala in Vaishali district. And if you happen to go to Kuthaghar Shala in Vaishali district, there is a Kolwa village, and where you can see this site physically. My way of looking at history has been that I also always try visiting the place, compare the notes given to us by the history and as it exists on the ground in geography. So if you juxtapose history and geography, you are sure what you're talking about. So this place is a very interesting place because it was here while Buddha was camping in Vaishali that 500 of women from Kapilavastu walked barefoot for days together. It's almost 300 to 400 miles from Kapilavastu to Vaishali. And they decided to walk barefoot because they wanted to prove that even women can take the kind of rigor which is required of a life of a monk or a nun. And when they reached Vaishali, their condition was naturally pathetic. These were women mostly who came from quite a princely background and royal background, and they had not even walked for maybe 10 kilometers at a stretch. They walked here barefoot. So the whole, their legs were swollen, completely blistered, और उनकी स्थिति ये थी जो आप समझ सकते हैं. So when they came and met Ananda was a little taken aback because he never saw them in this kind of condition. And it was led by the chief lady of Kapilavastu, that is Maha Prajapati, who was a Mausi of Buddha, as you know. And his wife, entire royal clan, they were all there, 500 of them, 500 of women in those times. You can understand what a sight it would be. So when they came, is this better? So when they reached Kutaghar Sala and met Ananda naturally was taken aback, but he was also skeptical about their motive, their objective. So he started conversation with Mahaprajapati, and she stated that they want to all join Sangha. And mind you, this was not the first time that Mahaprajapati had expressed her intent. When Buddha, if you recall the trajectory of Buddha post-enlightenment from Gaya, he first went to Sarnath, where he could meet all those 5 friends who had deserted him, and then he went to Kapilavastu. Kapilavastu, he stayed for a while, met his father, his wife, his son, everyone, and then he realized that if I were to reach out to people, I must have to go back. And people told him that in case you want to start the yatra, go back to Magad first. And in Magad there was a great giant intellectual called Gaya Kashyap. And Gaya Kashyap had a following of about 1,000 dedicated monks of a different kind. Naturally, they were Hindu monks.
So this is the background. So there, while he was in Kapilavastu, after his visit to Kapilavastu, post Sarnath, uh, he started talking to the family members. And Mausi expressed her desire to become nun. And Buddha was clear in his mind that perhaps this is not feasible. So he did not entertain her argument much, and he almost dismissed her, politely giving some arguments. So he knew that there is an urge amongst the royal family women members to join the Sangha. Then after we come back to Kuthagar Shala, Ananda started explaining to them that it is not possible. But they said that, look, we have proven ourselves. We have walked all the way for miles and miles together, and you see our condition, which is basically a testimony of the kind of rigor that we can undertake, even while living in a monastery. After a while, Ananda gave up and he said, okay, let me talk to to Buddha once again. So he went to Buddha, knowing very well about Buddha's view on this kind of rule which was followed then. He broached the topic, and Buddha naturally was skeptical and he dismissed the idea straight away, and he said that, look, it sounds quite okay, but it can create a lot of complication. And one of the very interesting statement made by Buddha then was that if we are thinking of taking that, if we are conceptualizing a situation where this religion would survive for 5,000 years, in that kind of scenario, it may not even survive for 500 years. That's a very controversial statement which was made by Buddha. But then when Anand was very persistent, as you know, and he had that kind of leverage and access to Buddha that he could talk back. So he started saying that, look, it's a very important component, and Adi Avadi and all, whatever argument he gave to him. And then he realized, and that's the time when we feel a very, very interesting and landmark debate on gender equality took place between Buddha and Lord Buddha and Ananda. If we were to go to the source and see what end of the day, Ananda realized that he was not against women joining the monastery, joining the Sangha, but primarily he had apprehension about their, security and safety. And he gives a very interesting argument that, look, we are completely on the move most of the time, except for 3 months in a year during the rainy season. And enemies are not only outside. Enemies are there not only outside, enemies are also inside. उन्होंने बताया कि दुश्मन जो हैं केवल बाहर नहीं है, जंगल में नहीं है, गांव में नहीं है. दुश्मन इशारे में उन्होंने बताया कि हमारे बीच में भी कोई हो सकते हैं. And therefore it is, I am not too sure कि मैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उस तरह से इंश्योर कर पाऊंगा. और वो the debate went on until Buddha relented and he said, okay, if you were to permit them to come inside the Sangha, then you have to draw a detailed kind of a code of conduct. And today the government of India and Modi ji, everybody is talking about making toilet for women. It would be very interesting for you to know कि woman का separate toilet की बात उस समय हुई, bathing घाट की बात उस समय हुई. And there are detailed references about how the monkeys and the monks join hands to create the bath for the woman. In वैशाली अगर आप जाएंगे आज तो वो घाट आपको फिजिकली दिखेगा और मान्यता ये है कि ये घाट मंकी और मॉन्क्स ने मिलकर बनाया था, which is very interesting. So
वुमेन सेफ्टी का जो इशू है ये उस समय भी बुद्ध के दिमाग में था. ही वाज सच अ मैन ऑफ सच ग्रेट फोरसाइट दैट ही कुड सी कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, टेकिंग वुमेन इनसाइड दी संघ विल बी अ डिफिकल्ट और ट्रिकी प्रोपोजिशन. तो ये चीज दिमाग में क्लियरली समझने की है कि बुद्ध औरतों के संघ में आने के खिलाफ नहीं थे. बुद्ध के दिमाग में जो अप्रहेंशन था कि अगर औरतें आती हैं संघ में तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेवारी, जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वो हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे वो श्योर नहीं थे. और उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि दुश्मन केवल बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर भी है और हम लोग कॉन्स्टेंटली मूव पे होते हैं. 3 महीने के अलावा जब रेनी सीजन में हम लोग एक जगह पे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन द मूव एंड देयरफॉर उनकी ये अप्रहेंशन से ये डिस्कशंस निकला और एंड हुआ इस बात पे कि ठीक है, अगर करना है ये तो आप डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, क्या व्यवहार रहेगा, क्या बात रहेगी. और ये इंटरेस्टिंग है, हमारे मित्र दास साहब बता रहे थे, हमारे मॉन्ग बता रहे थे कि उसमें भी डिटेल डूज एंड डोंट्स बनाया गया. एग्जैक्टली उन्होंने नंबर भी बताया. 253 रूल्स फॉर मेन एंड 364 रूल्स फॉर वुमेन वर चॉक्ड आउट सो दैट इसको अगर आप नहीं मानते हैं, वायलेट करते हैं, then of course there are consequences. तो ये चीज समझने की जरूरत है. अब मैं शोभना जी से, being a woman first, enlightened woman herself, and I consider her to be another kind of a nun, जिन्होंने साधना अपनी जिंदगी में की है, तभी वो वहाँ पे हैं जहाँ पहुँची है. तो एक मोटे तौर पे इस विषय पे आपकी क्या राय है और अंडरस्टैंडिंग है? इफ यू कुड शेयर विद दी, स्पेशली पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आती है कि ये तो नॉर्मेटिवली आपने परमिट कर दिया, प्रैक्टिकली क्या हुआ है? जी. Thank you very much, Uday. सबसे पहले तो once again congratulations to Sanjay ji, Deshkal Society for being able to have these Bodh Gaya Dialogues for so many years and to continue it with a lot of scholars and a lot of participation. Congratulations to you. Uday ji has really laid the sort of talked about the basics, and he's really put it in a nutshell about Buddha's approach and attitude to women. Now, he's raised a lot of questions. I will take a few things. Buddha comes at a time. We have to also understand that none of us, now this is a general remark, none of us are living in a vacuum. We are all living in society, where in an environment where we are impacting and we are being impacted. It is a constant process. And since it is a constant process, the first fact that Buddha showed that he was a little different in thinking from the general mood of that time was when he took the path of trying to find himself what is what. I mean the path of trying to find himself. अब आप उसके eightfold path आया about understanding about why is there so much pain in life, etc. So there was a thinking mind. There was a mind that respected all human beings. There was a mind that believed in harmony and in kind of a perfect, that everything is taken to be part of life. So here we have Buddha. Now the basic character over here is Buddha. Now we are talking about his attitude to women. It does not necessarily, we have to also see that why did the women, now the first question, what were the motivations? So that takes me to the fact, what was the motivations created by society at that time?
Was it the fact that women, whether, for example, for his Mausi, the compulsions were different. For Yashodhara, was it a society that did not respect her or looked at her with different eyes क्योंकि उनके पति ने उनको छोड़ करके चले गए थे? Was it a society where other women must have had their own reasons? So I'm now looking at society and the motivations which motivate. There could be two, that they are actually the motivations created by all of us as part members of society. कि मुझे हताश करके I am running away कि भाई I believe in Buddha. Now that is one. That I am taking it as something that I perhaps joining the Sangha, taking nunhood would be a better option where I would get more, I would, sort of respect as a human being and also be able to pursue my path. There is another thing, कि actually you believe in it. अब दोनों में क्या था? We are not party to it. They have not written anything. Neither has anyone written on their behalf. No discussions are there available. If there are, I have not read it. But if there are discussions, I would love to be enlightened about it. So I think it raises many issues that what were the compulsions of that time? Because it could very well be कि इन 500 औरतों में से there were few of them, not perhaps all, but a few of them who actually believed कि what he's saying is correct. But there could be some who had their own reasons and some who had some other reasons. So it takes me to society of that time. Even it takes me to society because it was also the society of that time which made Buddh Buddh. Because उस समय, as far as women were concerned, I could think that there was patriarchy. When you think of many other patriarchism was at its, काफी, there was rigidity. There was also a reflection on the women's position that she was meant to serve. That means, जब आप कह रहे हैं कि meant to serve, that means you're a subordinate. Automatically it means that I am in where you have to serve me. So again, so there is a little bit of distinction between the two positions of the male and the female, men and women. Then also to the fact that then at another place you have also discussions on what should be the virtues of a wife. And out of the 7 virtues, and I listed out, largely that even in written by many scholars or in this Pitak or in this Gatha, directly, indirectly, there are many ways. Now, those are my very questions. And I'm also stating a fact. I am questioning these. My mind is reasoning because I am also what I am, but also a product of today's environment. So let us all not forget that we, all of us, think from the point of view, or the basic is from where we are and what kind of environment. Perhaps if I had grown up in the interior tribal areas of being part of that family, even 70 years ago or 80 years ago, my way of thinking would have been different because a woman's position in that particular tribe would have been different. Whereas in the plains, it was a little different. And so it always depends from which point of view am I and where is my starting point. But those are the questions that I'm raising. And I don't have an answer, but I think I can raise the questions. And then I would also like to say that a lot of them,
at that point of time, because slowly it also translated itself into a way of thinking, is that women were considered also impure. And so with the result that you had to keep them away. Now there were, ab aapne kaha, so that was one. Then you said, why did Buddha dismiss them initially? That is another question. Why did he dismiss them initially? Ek to tha, कि भाई we have made out certain rules and regulations, क्यों करना है? Anand also took him time to be convinced, because he also cited key rules and regulations hai. Now, what were those rules and regulations about? What was it? Was it to, again, that you mentioned something कि दुश्मन हमारे अंदर और बाहर है, ठीक है? बिल्कुल सही. दुश्मन तो अंदर और बाहर तो होते ही हैं. One is an external environment, where the gender itself is a little different, which plays its role. But ek to, it is beyond gender, because that dushman is within you. In the best of best atmosphere, without any, with the best of intentions, one could succumb or get moments of weakness. So was it that, so those moments of weakness was as applicable to a woman, but it is also applicable to man. So whatever was being said about a woman could also be made applicable to men. And that is why, if you look around, we've had a lot of discussions on this, about on this aspect of life, on these aspects of weaknesses, which are there and which have been discussed time and again. Stray incidents do come up in certain orders, but that only is to show that it is not only a prerogative of the woman that she has to fall prey to the dushman inside. It can also be the man. So I am also counter-questioning that. The third is that when you are making rules, why so X number of rules and X plus rules for women? What was it? It should be the same. Because after all, if you're believing in gender equality, have the same number of rules for them. So what are the X number? If you're talking in terms of the physical protection and security, yes, that is there, okay, a couple of them were there, but I would not say that it would amount to a difference of more than 100 rules. So those are again questions that come to a questioning woman's mind of the 20th, 21st century. And I would also like to mention that Anand's reaction, this and that, yeah, that on this, there are many references that women, Buddha ne nahi kabhi kaha. Buddha has never said it. But and also, when we are saying that Buddha ne kaha and all, we know that Buddha never wrote down what he said. Anand also, whatever his discussions were with Anand, whatever Anand understood and was able to imbibe, those were the ones that he was able to convey to others. So whether in this little process there is a little, is it, yes, exactly, is it 100% or is it only 99% or 98%? I have to give this. But after that, what he has conveyed and the others have understood, there is also a little bit of gap. What is it? So, because it depends on your frame of mind, the listener's frame of mind. So, how much is that difference? Now, so there is a little filtering down or also weakening of the actual message, import of the message or import of a statement.
And now to say that these were written now, when were these written? Because then it was an oral tradition. Oral traditions are subject to change according to time and according to people's. But actually the entire Sangha and order came into existence. The ism factor came and they started being much later. So by then also, whether it was in the true spirit of what was meant to convey, or whether during the intervening years and ages, some practices had been watered down or changed or modified according to trying to keep the spirit, but yet, I'm not talking about the intentions. Intentions were there, okay, but the intentions could have also could have been tinged by the atmosphere of the intervening period, and the mindset of that prevailing period is also something that we all need to take into account. And today when we are looking at it, and I'm looking at even, say, why is it that everybody says even a woman monk can attain a Buddhahood? Now, one stream says yes, another stream says she has to. I mean, there are innumerable examples given of how, and legends given of how so-and-so, 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 overnight, the breasts disappeared and she developed male organs, and then she was accepted into arahantship and things like that. So what was it? So which again reflected the kind, now these are the Lotus Sutras, you'll see. Now Kenneth Dune Young Lee interprets that the Lotus Sutra says that women are capable of attaining salvation. Now again, capable of attaining salvation. Why don't we ask this question of man? Why is it never asked that a man is capable of attaining salvation, but the question comes up before a woman that the woman is capable of attaining salvation if she does X, Y, Z. So why this question? So that's another thing. Then why your Cheng says in the Pali Canon that the Eightfold Path requires a woman's subordination. What does it mean? He's quoting the Viman Vatu, chapter 3, verse 3.31. And so there again it says that the women's subordination has to be a prerequisite. So why again the word subordination? Why not an equal? Why a subordination? Then Lotus Sutra gives them, as I said, of becoming manlike before becoming a bodhisattva. Now, these are some of the questions which I have there, and therefore, even when I'm talking about his, or even Amrapali debates, or these things are that after all, she was accepted much later into the Sangha. But then here is a woman who had actually elevated herself of the worldly, physical and other power desires. Now when you're saying that the woman is more prone to to vices like greed and ego, anger, etc. Those are being quoted against a woman. Now, why is it? I cannot say that men are equally prone to all these vices, and if not more. After all, look at history. The history of even this very region of Magad and others, if it was the lust for power, the greed to have more and more power, the greed to even own Amrapali, which led to even the demolition of the republic and wiping out of the republic and so on and so forth, that it became a different form of government later on, and so on and so forth. So what we are
attributing as vices and faults to a woman, are, my question as a woman is, it's equally applicable to man, and we need to discuss on it and not shy away from these discussions. Thank you, Shobna ji. Well, process it appears that I have become a defender of the faith. And I have to defend Buddha. And actually, No, I'm not. I am defending Buddha. I'm not faulting Buddha. I am faulting the interpretation and the system which has come about later on. in fact, there it is that, Buddha has never, he became Buddha because he thought differently. He thought differently from the prevailing society of that time. He had questions. And on the issue of the protection, let me quote a personal example of mine. When I was a young officer, everyone in the audit department was being given, to head audit parties to go into these, hazardous places and, remote places, etc. I was not being sent. I felt a little, so I went to the then, head, that is the accountant general. I said, why not me? He says, now this is, so I couldn't quite understand Buddha. He said, who will look after your security and safety? Those are dacoit infested areas, and and those are very remote areas, etc. I'm a little concerned on that. So I said, sir, if I can drive alone in the middle of the night from X place to Y place, from the western coast on the borders across Chambal, Ghati, and go there alone, then why can't I do that? So he just looked at me for a second and he said, okay. I said, I'm not going to fault you. If something happens to me tomorrow, please rest assured, I will not be the one to say that I was a woman, I was not given security and protection. I said, I'm not that kind. When he was assured that I was taking my own responsibility, the doors and windows were open. I never had any problem. So I can quite understand, and I sympathize with both because as I sympathized with my accountant general at that time. So I understand both of why he was hesitant, as I understand my accountant general of that time. so you feel that your accountant general was speaking like Buddha. He was showing concern, but he wanted to. The very interesting issues that you have raised, Shobna ji, and of course, पहली चीज़ तो है कि डायलॉग में मैंने महसूस किया है ज़रूरी है कि हमारी कितनी ऑडियंस इंग्लिश प्योरली समझती है और कितनी हिंदी और वाले हैं, ताकि डायलॉग मीनिंगफुली खूबसूरती से ज़्यादा. मेरी आदत है कि बीच बीच में मैं हिंदी में चली जाती हूँ, फिर अंग्रेजी में आ जाती हूँ. जी. Even we have a senior monk with us. Sir, is it okay if we also discuss it in Hindi? Yeah, that's, you understand Hindi? No, very good Hindi. हाँ, तो इसमें जो लोग थोड़े से देर से आए हैं उनके लिए ब्रीफली हम लोग क्या बहस हुई उसको समराइज करते हैं और तब हम इस डायलॉग को आगे ले जा पाएंगे. बात इससे शुरू हुई कि क्या बुद्ध औरतों की कैपेबिलिटी को कम आंकते थे, इससे बात शुरू हुई और कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि वैशाली का एक जगह जो आज भी है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, उठाघार शिला के पास एक ऐसा स्पॉट है जहाँ कपिलवस्तु से करीब 500 औरतें नंगे पांव के पैरों में छाले पड़ गए और वो मीलों चलकर पहुँचे इस जगह पे, और जहाँ पर बुद्ध कैंप कर रहे थे और आनंद उनके शिष्य भी वहीं थे, और आके उन्होंने कहा कि हम लोग सब
ज्वाइन करना चाहते हैं या संघ में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पहले तो आनंद ने उस समय का जो नियम था उनको कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि नियमतः औरतें इस संघ में ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, इसलिए मैं उसमें उस नियम से बंधा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो हमने प्रूव किया है अपने इस रिगरस यात्रा में कि जो काम पुरुष कर सकते हैं हम लोग भी उसी मुस्तैदी से, उसी शिद्दत से वो काम कर सकते हैं। तो आप जाके बुद्ध को समझाएं ये चीज़। और उन्होंने इसलिए आनंद को कहा क्योंकि पहले एक बार वो डायरेक्ट बुद्ध से बात कर चुकी, जब बुद्ध गए थे कपिलवस्तु। अब बुद्ध ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था कि ये संभव नहीं है। तो इस दफ़ा उन्होंने मध्यस्थता की अपेक्षा रखकर ये बात आनंद से रिक्वेस्ट किया, और आनंद ने फिर थोड़ी देर के बाद माना कि ठीक है, मैं बुद्ध से जाके बात करता हूँ। तो बुद्ध से जब उन्होंने बात की तो पहले तो बुद्ध ने भी अपने नियम को दोबारा दोहराया, लेकिन फिर जब बात का सिलसिला आगे चला तो वो हम उसे जेंडर इक्वालिटी का बहुत सुंदर डिबेट मानते हैं, क्योंकि उस समय इस तरह के डिबेट्स होते ही नहीं थे। नियम बन गया तो बन गया, और उसमें ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स था कि शिष्य में और गुरु में उस तरह का डिबेट की संभावना होती थी कि गुरु कुछ और भी कह रहा है तो शिष्य उसे एक दूसरे तर्ज पे ले जाने की कोशिश करे। तो उस समय बुद्ध ने ये बात दोहराई कि जो वुमन की सेफ्टी है, वुमन की सिक्योरिटी है, वो हम शायद इंश्योर ना कर पाएँ, क्योंकि पूरे वर्ष में हम लोग 3 महीने को छोड़ के, वर्षा ऋतु को छोड़ के, बाकी समय चरवैते मोड पे रहते हैं, चलते रहते हैं। और उसमें इनफैक्ट दुश्मन केवल अंदर नहीं है, दुश्मन बाहर भी हैं, और अंदर के दुश्मन पे तो फिर भी काबू पा ले आदमी, बाहर के दुश्मन में तो फिर भी काबू पा ले आदमी, अंदर के दुश्मन से हम कैसे। और शोभना जी ने उस बात को बहुत, उसकी बारीकियों को की तरफ इशारा किया कि दुश्मन एक कॉन्सेंट्रिक लेयर की तरह 3 फोल्ड है, 2 फोल्ड नहीं है। एक तो बाहर की दुनिया जो कि संघ के बाहर के लोग थे, एक संघ के अंदर के लोग थे, और एक संघ के हर सदस्य के अंदर का दुश्मन था। इन तीनों से दुश्मनों से लड़ने में कॉन्फिडेंस ना होने के कारण बुद्ध ने ये बात कहा कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। बहस आगे चलती रही, अंत में उन्होंने कहा कि वी शुड ड्रॉ अप अ लिस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में बनाना चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट बना और ज़ुबानी बना उस वक्त, जैसा कि आपने सही कहा। और उस ज़ुबानी को कुछ समय के बाद जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में शायद इन्होंने कोडिफाई किया। तो कुछ सवालों को शोभना जी ने इस बेसिक फैक्ट्स पे खड़ा किया है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्गली पोजिंग योर क्वेश्चंस। पहला सवाल तो शोभना जी का ये है, और मेरे लिए इंटरेस्टिंग विषय है क्योंकि उस पर मैं काम करता रहा हूँ। आम्रपाली। आम्रपाली एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बुद्ध के जीवन में। तो उनके जीवन में 4 औरतें हैं। मदर तो गुजर गई थी 7 दिन के अंदर। मदर के बाद मौसी ने उन्हें फॉस्टर मदर की तरह पाला पोसा। शादी हो गई, उसके बाद वाइफ थी। तीसरी सुजाता थी और चौथी आम्रपाली थी। ये चारों औरतों का एक इन्फ्लुएंस बुद्ध के लाइफ में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रहा है। और आम्रपाली का जहाँ तक सवाल है, आम्रपाली की खूबसूरती की चर्चा ये थी कि बगल में ये लिच्छवी राज्य था जहाँ रहती थी आम्रपाली, और गंगा के पार मगध था। और आज भी ये बिहार में, और ये लोग मजाक में लेकिन कहते हैं कि मगध का लड़का और मिथिला की लड़की, मतलब गंगा पार की लड़की। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तिरुत की, आई स्टैंड करेक्टेड।
तो ये जो उस समय उसकी बीज आप उन थॉट्स की उस समय देख सकते हैं। ये जो दोनों फादर एंड सन थे, एक समय वो स्टेज था जहाँ फादर आके दिन में मिलते थे अम्रपाली से और रात में अंधेरे में छिपकर सन जाके मिलता था। इमेजिन जो औरत को दोनों राज्य का राजा और उसका बेटा वो कर रहा हो, और जितने प्रिंसेस थे वो तो बेचारे छोटे छोटे एस्पिरेंट्स थे। लुकिंग एट हर ब्यूटी दे ऑल वांटेड टू बी फ्रेंड हर, उनसे नज़दीकी चाहते थे। और तो उस शी वॉज नॉट एन ऑर्डनरी वुमन, देयरफॉर उनकी ब्यूटी और उनका ब्रेन दोनों उनको एक अलग ही कैटेगरी में एक मैं यहाँ थोड़ा सा जरूर इंटरजेक्शन दूँ। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि डजंट इट रिफ्लेक्ट कि ये जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का सिस्टम है कि आप किसी बच्ची को, क्योंकि बेहद खूबसूरत, बेहद टैलेंटेड, बेहद सब कुछ में उत्तीर्ण है, आपने उसको कहा कि वो नगर की वधू है। आप तो ये क्या, अगर औरत का मेट्रियार्कल सिस्टम होता तो क्या वो ये होता, इस तरह की संज्ञा दी जाती? मुझे मालूम नहीं। मैं एक प्रश्न चिन्ह छोड़ रही हूँ कि इस मेट्रियार्कल अगर सोसाइटी होती उस वक्त, लेकिन क्योंकि एकदम इट शोज कि वो एक वेरी हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तभी सभी लोग उसे किसी न किसी तरह से वो एक विकृति जो है, एक पाने की विकृति जो अंदर जो आदमी एक हर एक मेल के अंदर है, वो उसके के तरफ संकेत कर। तो गिवन है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये तो गिवन है कि आज उस पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्रिटिकली हम आज मॉडर्न क्या पोस्ट मॉडर्न ज़माने में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये गैप तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली लैटेंटली और विजिबली सामने आता ही है। मैं किसी तरफ इशारा कर रहा था कि अम्रपाली की पर्सनालिटी, शी डिडंट रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी वुमन, शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन, केवल लुक्स में नहीं, इंटेलिजेंस में भी। और तमाम जो पावरफुल मेल थे उस समय के, ओनरशिप का ही लालच से, कंट्रोल के लालच से, पावर एक्सरसाइज करने का लालच से, दे ऑल वांटेड टू ओन हर इन अ वे, ओन हर बॉडी, ओन हर एग्जिस्टेंस एट्सेट्रा। लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट थी। वो समाज एक तरफ तो ओनरशिप ओवर वुमन का फोकस करता था, लेकिन वही समाज वो स्पेस भी अम्रपाली को देता है जब अम्रपाली enjoyed a complete autonomy to say no to any man. Absolutely. Any man who wanted to approach her or get access to her without her, consent. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है जो शायद हम तो उस समाज के ढांचे में वो डेमोक्रेटिक समाज था ट्रू सेंस में। इसीलिए आज भी हम पृथ्वी के समाज को बहुत आगे का समाज मानते हैं, इवन मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में। मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रहा था शोभना जी, मैं किसी और तरफ इशारा कर रहा था। जो मैंने पहले बोला था। जी बिल्कुल जी। मैं इशारा ये कर रहा था कि अम्रपाली जब बुद्ध से मिलती है तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, और वो इंटरेस्टिंग प्रसंग इस तरह है, वो कहती है कि मैं दो तरह के मर्दों से मिली हूँ। एक मर्द जो मुझे देखते ही वासना उनके आंखों में टपकने लगती है, और दूसरे मर्द जो थोड़े सात्विक विचार के हैं, वो मेरे रूप की परवाह ही नहीं करते। हाँ, रूप के चमक को देख के आंखें उनकी झुक जाती हैं। दे आर नॉट एबल टू सी, लुक एट मी बिकॉज इट्स सो स्पार्कलिंग। लेकिन जब बुद्ध से मैं मिली, वो लिखती हैं अम्रपाली की दो चीज़, राइटिंग आप सबको बहुत इंटरेस्ट करेगा। एक पार्ट ये कि जब वो कहती हैं कि किस तरह के मर्दों से मिली, बुद्ध से जब मैं मिली तो वो मेरे ब्यूटी को देख के कंप्लीटली अनफेज्ड थे, अनफेज्ड थे, कोई असर भी उनके चेहरे पर नहीं देखा। और उसकी बातों से साफ लगता है कि उसका पहली बार वो कॉन्फिडेंस
that a man looking at me will go in for a toss. वो टूटा. And here बुद्ध के पर्सनालिटी का जो मैग्नेटिज्म है वो उभर के आता है कि बिल्कुल कि ही दैट हाउ मच ऑफ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ही हैड, और वो एकदम कहीं किसी और स्तर पे थे. जी जी. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो कहती हैं कि बुद्ध को जब मैं देखी तो बुद्ध के चेहरे पर कंप्लीटली निर्लिप्त, एज इफ बाकी दुनिया की तरह मैं भी हूँ. और वो पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन ने अम्रपाली को ऐसे थोड़े से ज़मीन पे अपने रूप को लेके जो उसका एक घमंड कहें या कॉन्फिडेंस कहें वो था, वो नीचे आता है. लेकिन शी डजंट गिव अप. शी इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट रिजॉल्व. वो अपने पास जो कीमती चीज़ें थी, पहले नेचुरली उसका रिक्वेस्ट होता है कि संग में मुझे लिया जाए. बुद्ध मना कर देते हैं, पोलाइटली मना करते हैं, समझा के मना करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग वो रूप है. पहली बार में उसके कहते हैं कि ऐसा है अम्रपाली कि आप जाकर विजुलाइज करो कि यू आर एट द पीक ऑफ योर ब्यूटी. एज वाइज आप एकदम ब्लॉसम स्टेट में हो. लेकिन आज से 30 साल पहले हाउ विल यू लुक? Go and visualize and come back to me. And she being a very intelligent woman, she is not only a beautiful woman to look at, she is a woman who has great brains. तो आके रिफ्लेक्ट करती है अम्रपाली. और वो जो उसने कविता लिखी है अम्रपाली ने, वो अपने आप में हिला देने वाली कविता है. जब आप अपनी जवानी, अपना रूप, अपना धन, अपनी ऐश्वर्य को जब टाइम स्पैन में देखते हैं, आज से 30 साल बाद वो भी रूप जैसी चीज़ जो कि बिल्कुल, तो उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड एट सम स्टेज यू विल रियली. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से नो, बट यू नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो भी आम्रपाली का भी जो कहा है वो भी हम लोग बाद में देख रहे हैं. जी जी. तो वो हम अनुमान लगा रहे हैं जी, उस पे हम लोग अनुमान लगाकर किसी ने बाद में उनके शब्दों को उनके मुंह में डाल करके लिखा है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. या उस पे मैं आता हूँ जी. और एक सुजाता के ऊपर भी है कि सुजाता के ऊपर भी कई कई कहानियाँ हैं. आप अलग अलग चले जाएं तो किस तरह से कि क्या कि एक है कि एक का है कि वो इसलिए पहले नहीं लेते हैं. एक कि पूछा जाता है कि क्या, वो एक प्रश्न करती है, क्या मैं क्योंकि उच्च कुल की नहीं हूँ और फलाने हूँ और इसी तरह से, क्योंकि वो अपना फास्टिंग पे थे. तो अलग अलग कहानियाँ हमें मिल रही हैं. मेरा सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुझे अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं हर एक कैरेक्टर के साथ. अब उसमें फाइनली बुद्ध के ऊपर कोई लांछना नहीं है, लेकिन द होल थिंग इज कि बुद्ध को वो हम दिखा रहे, वो हर जगह उन कहानियों में बुद्ध की एक्चुअली द ग्रेटनेस एंड द नोबिलिटी वो निकल के आती है कि व्हाट अ ग्रेट सोल ही वॉज. कि अगर आप उच्च जाति के हो या ना हो बराबर है, उनके हाथ का खीर लेते कर खाते हैं. अगर वो बदसूरत हो, सूरत वाली हो या कुछ हो, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं. फ़र्क पड़ उनको क्या है कि आप इंसान कैसे हैं, आप वो किस तरह से अपने आप को वो जो लेकर के आगे चल रहे, वो बेसिक पर, और कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि वो बुद्ध वॉज अ पर्सन हु, जो कि खुद अपने जीवन में उन्होंने वही प्रैक्टिस किया जो वो कह रहे थे. और अब आप और हम किस तरह से समझ रहे हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक अलग बात है. नहीं, वो बिल्कुल
क्योंकि सुजाता के प्रति की भी कई सारी कहानियां हैं। जी, सुजाता मैं जब इशारा कर रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं सुजाता की ही बात कर रहा था। सुजाता पर मैं एक नॉवल पे काम कर रहा हूँ और उसकी चर्चा कभी और मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, आपसे पर्सनली भी करूँगा। लेकिन ये बात आपने उठाई है कि एक तो पूरी चीज़ों को लिखा गया है बाद में, सच्चाई है, और इसीलिए रिजोल्यूशन लॉस चाइनीज़ विस्पर का हम लोग सब जानते हैं वो होता है। हमने आज आपको एक बात कही, आपने उनको कही, और अंत में जब वो लिखा जाता है तो उसका निचोड़ में रिजोल्यूशन लॉस होने की संभावना पूरी रहती है। उस पर डिबेट नहीं है। मैं इसलिए इन चीज़ों को दो हिस्सों में बांट के देखने की कोशिश करता हूँ। एक उसकी यूनिवर्सैलिटी और एक उसकी सब्जेक्टिविटी जो टाइम स्पेस से गवर्न होता है। और मैं फोकस करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर, प्राइम ह्यूमन नेचर आज भी उन्हीं नवरस की कहिए हर सिविलाइजेशन में, आप तो इसको जीती हैं एज ए डांसर। बिल्कुल बिल्कुल वही वो है, इमोशंस के जो 7 शेड्स हैं यूनिवर्सली आज भी वही हैं जो 2500 साल पहले थी जब बुद्ध थे। और इसीलिए उसके इसमें मैं आलोक में जब देखता हूँ कि आम्रपाली ट्राइज टू वो अटेंशन, और कोई चीज़ वर्ड अटेंशन ऑफ बुद्धा, उसकी सबसे बड़ा जो गिफ्ट उसको मिला था आम्रपाली को। उस जमाने में बहुत सिंपल गिफ्ट्स मिलते थे, लेकिन उसकी एक महत्व वो मिला था वहाँ का एक मैंगो ग्रुप। आम्रपाली आम आज भी बहुत खास माना जाता है, और उस राजा ने दिया होगा, वो संघ को दे देती है गिफ्ट में। एंड कहीं ना कहीं वन आफ्टर अनदर शी ट्राइज टू वू कि हमारी बात मान ली जाए। ही रिमेन्स अनफेज्ड देयर टू। और जब संघ में लेने की बात भी होती है तो संघ में सबसे पहले बुद्ध अपनी मौसी को ही लेते हैं, उस प्रायोरिटी जो उनकी थी, फिर अपने वाइफ को लेते हैं, और आम्रपाली का नंबर इनके बाद ही आता है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर सुजाता का केस अलग है। सुजाता के केस में जब वो बुद्ध मिलते हैं उनसे, तो ही इज इन अ रॉ फॉर्म, और वो एक जिद और एक हठ धर्मिता के ऊंचाइयों पे पहुंच के माउंटेन मॉडल से रिवर मॉडल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और सुजाता और आम्रपाली का एक फ़र्क सबसे बड़ा मैं महसूस करता हूँ कि आम्रपाली बुद्ध को वो करती है, सुजाता वो नहीं करती है। सुजाता के जो कॉन्वर्सेशंस हैं, इट्स एट अ इक्वल लेवल, इज कम्प्लीटली, यू आर वेरी राइट, वो एक बराबरी का है। और उसे सुजाता उन्हें ताने देती है कि यू इडियट, यू डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, देखने में लगते हो कोई बड़ी जगह से, और एक काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट उसमें एक सखा भाव है। बिल्कुल। और आम्रपाली में का भाव बुद्ध के कॉन्वर्सेशन में या इंटरेक्शन में एक अलग तरह का है। तो सुजाता वाला जो, मैं एक चीज़ और कहना चाह रही हूँ, मैं आई एम इन डिफेंस ऑफ बुद्ध, नॉट इन डिफेंस ऑफ यशोधरा, नॉट इन डिफेंस ऑफ यशोधरा, कि यशोधरा जब वो आती हैं संघ में, क्या उनका एक और मोटिवेशन था कि मैं, एक तो शायद उस समय का समाज, दैट इज़ वन, दूसरा कि मैं अपने बेटे के पास भी रहूँगी। एक मातृत्व जो है, मातृत्व भावना की जो खिंचाव है, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। तो दैट इज़ वाई मैंने कहा कि बुद्ध समझ गए होंगे, तभी वो रेजिस्ट भी कर रहे थे। तो कि कहीं थोड़ा सा स्वार्थ भी होगा, तो स्वार्थ सभी औरतों में था या नहीं था कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद नहीं था, ज़रूर। तो धन्यवाद शोभना जी, समय की पाबंदी है और इसलिए इसको बहस बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये इट कैन गो ऑन इन अ चरवैते मोड, बट परहैप्स वी कांट अफोर्ड टू डू दैट।
तो क्विकली अगर 2 मिनट हम लोग कोई प्रश्न या कोई संशय जी डॉक्टर प्रोफेसर मनीष सिन्हा साहब। वास्तविकता है और खास करके कहीं आम्रपाली का जो लीजेंड है या वास्तविकता भी जो भी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कि बुद्ध के संयम को दिखाने के लिए, बुद्ध के लिए। रही बात सुजाता की, सुजाता पर तो बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि उसे क्या नहीं होता था, तो उसकी सहेली आकर देखी, ये प्रागबोधि से आकर यहाँ पे पड़े हुए थे, वहाँ नो व्हाट टू डू। तो उसके बाद जब वहाँ थे तो एक आई सहेली कह रहे तो महात्मा है वहाँ बैठे हुए, क्यों नहीं वहाँ जाते, खीर वगैरह लेकर गए, भूखे तो उन्होंने खाया। तो बड़ा नॉवेल के हिसाब से इसको गीत करके इतिहास भी है, परंपरा भी है, विश्वास भी है, इन्हीं सब विषयों के बीच में ये विमर्श चलता है। तो ये प्रश्न नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन। इट्स एन ऑब्जर्वेशन एंड आई थिंक दो हैं, एक तो है कि वी कैन सोच का है और एक बिलीफ का है। हाँ, तो वो बिलीफ जो है मैं उसको उसका आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर कोई किसी के मन में कोई प्रश्न है, लेकिन प्रश्न भी वो जिस तरह से डिबेट हैं, डायलॉग्स हैं, वो हम उठाते रहेंगे और उठाते गए। पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। लेकिन बिलीफ अपनी जगह है, वो उस अपनी जगह है। पाली निकाय से लेके दिग् निकाय, पाली सूत्र, जी 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 ये हाँ, विश्वास जो है बिल्कुल। यस सर। बहुत धन्यवाद। और काफी सारगर्भित चित्र और विश्लेषण आपने किया, आप लोगों ने। हमें 2-3 चीज की क्वेरी बनती है और मैं समझता हूँ पूछना है। सबसे पहला, क्या उस समय वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब उस समय 500 महिलाएं सैकड़ों मील पैदल चल करके अपनी समस्या रखने के लिए पुलिस के पास आ सकती थी। इसका मतलब आज से उस समय भी वीमेन एम्पावर्ड थी, और यदि वीमेन एम्पावर्ड थी तो आगे जा रही है, यदि वीमेन एम्पावर्ड थी तो क्या वे आम्रपाली को सलाह नहीं दे सकती थी कि यदि तुम एक काम कर रही हो तो ये गलत है? दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नारी के छोड़ने से मुक्ति मिल सकती है? उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तभी तो उन्होंने यशोधरा को छोड़ा। लेकिन हमारा क्लासिकल लिटरेचर को बताता है बहुत सारे ऋषि बहुत अच्छे बने पत्नी के साथ पत्नी। इस पर हम जानना चाहेंगे, क्या पत्नी को छोड़ने से मुक्ति मिल सकती है? बड़ा फंडामेंटल सवाल है। तीसरी बात, पति को छोड़ने से भी। तीसरी बात, जब बुद्ध ने रिवर्स करके भी देखिएगा। जब बुद्ध ने यशोदा को छोड़ा, उस पर बुद्ध की उम्र क्या थी और कितने दिन उनको इनलाइटमेंट में समय लगा, कितने दिन उन्होंने तपस्या किए, जिससे यंग जनरेशन को भी मौका मिले कि मैं सबसे पहले वाले आपके सवाल का करूँ, विमेन एम्पावरमेंट, उसको आप विमेन एम्पावरमेंट कहेंगे कि जो आकर के इतना 500 किलोमीटर या 500 महिलाएं और इतने सारा जा कर के करेंगे, तो वही कि अकेले आई हैं तो विमेन एम्पावरमेंट हुआ। मैं शायद वो डेफिनेशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट ज़रा क्वेश्चन मार्क है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और बाकी दो पर, जैसे सेकंड वाले में तो इन्होंने वैसे ही कहा कि क्यों ना ऐसे हम देखें, और तीसरे पे तो सभी लोगों ने, प्रजा ने ही बता दिया सभी लोग। शोभना जी का कहना है कि ये फ्लिप करके भी देखें, क्या पति को छोड़ के एक महिला को लिबरेशन या एनलाइटनमेंट मिल सकता है, और पत्नी का तो केस है ही।
ये बड़ा जी जिस समाज में रह रहे थे वो एक सत्तात्मक समाज जी लैंगिक समानता के लिए उनकी नजरों में सत्तात्मक समाज या मात्र सत्तात्मक समाज कौन बेहतर बड़ा गहरा प्रश्न है। ये हाँ मेट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रियार्कल सोसाइटी देखिए जहाँ तक बुद्ध का सवाल था वो ना मेट्रियार्कल सोसाइटी ना पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो एक इक्वालिटी की बात कर रहे थे, वो समानता की बात कर रहे थे। लेकिन ये मत भूलिए कि वो पूरा परिवेश जो उस समय का था वो पेट्रियार्किज्म से, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी था। समाज में समाज को परिवर्तित Cross the time. Cross the time. Thank you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। There is one announcement. Have you seen the program schedule? Look, exactly. So at I'm sorry. I'm forgetting it. सुरेंद्र शर्मा वोल्गा की एक अच्छी किताब है, ये यशोधरा पढ़ी आपने? वोल्गा, हाँ नाम वोल्गा महिला का नाम है लेकिन वो पेन नेम वोल्गा है। उसे देखिए कि उसमें यशोधरा का कैरेक्टर जो है ना उसको एक एजेंसी के रूप में प्रेजेंट किया, उसको इस ढंग से नहीं देखा अस वर्सेस देम ने, उसने उसको आइडेंटिटी बनाया। हेलो हेलो हेलो
Can I request you all to please be seated so that we can start the session? Thank you, everyone. We'll be starting with the next session for the day. It's a book discussion, the Kal Chakra Tantra, translation, annotation and commentary by Shri Neeraj Kumar, author, translator and director, Ministry of Culture. I welcome you, sir, on the dais. With Professor Tashi Sering, Dean, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath. Welcome, sir. Neeraj Kumar is a proponent of Pan-Asianism. He is the author of classic work on Asian integration, Arise, Arise, in 2003. The sequel, Asia in Post-Western Age, was published in 2014. He has edited a comprehensive work on the Himalayas, Himalayan Bridge. A commentator on Shakta and Buddhist Tantras, Kumar is active with various facets of Himalayan Buddhism for more than a decade. His forthcoming work is a 5-volume pentology on the Kal Chakra Tantra. This is the first comprehensive translation and a new commentary of the cryptic Sanskrit texts of the 11th century after several centuries. Kal Chakra Tantra was the climax of Nalanda tradition and the last major Buddhist Tantra that was composed in India. Presently, he is the Director, Ministry of Culture, Government of India. Professor Tashi Sering got his Shastra, Acharya and PhD degrees from Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, and has been teaching there since 1989. He is a visiting professor at many universities abroad in USA, Austria and Korea, and has also visited Singapore, Malaysia, Thailand and Australia for dharma activities and seminar and academic purposes. He has 35 publications to his name. At present, he is a professor in Buddhist philosophy, HOD of 4 Tibetan Buddhist schools, librarian, chief coordinator of academic exchange program with many countries. Thank you, sir. The dais is... नहीं यहीं पर लूँगा जी जी सबसे पहले मैं नीरज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसलिए कि उन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर किताब लिखा है इसके ऊपर वो तंत्र के ऊपर
वो भी काल चक्र के ऊपर हाईएस्ट योगा तंत्र मानते हैं ना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो उसके किताब के विषय में हमने कुछ रिफ्लेक्शन रखा गया, वो अंग्रेजी में है, पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, बाद में अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। In today's book discussion on Kala Chakra Tantra, I have made 6 sections as follows. Number 1, introduction. Number 2, related with scholar Niraji. Number 3, reflection on the general introduction of Kala Chakra Tantra text written by scholar Niraji. Number 4, reflection on the first patala of Kala Chakra Tantra text written by scholar Niraji. Number 5, general information on Vajrayana. Number 6, related with Kala Chakra text. Now, number 1, introduction. More than 2,500 years ago, Siddhartha attained Buddhahood under the Bodhi tree at Bodh Gaya, and later on, he spread Buddhism by turning various kinds of the wheel of teachings, either 1, 3, or 4, according to Sarvakas, Mahayanis, and Vajrayanis, respectively. The flourishment of teaching was initiated from North India, such as Bodh Gaya, Varanasi, Rajgiri, Sarvasti, etc., during the Buddha's time. And later on, it pervaded all the 4 directions of India through various Indian masters, such as 6 ornaments, 2 supremacies, or 17 Indian Panditas and 84 Indian Siddhas, etc. Because of having special taste in Buddhism, all the neighboring countries tried their best to carry Buddhism to their countries, either sending students to India or inviting Indian scholars and siddhas to their countries. In this way, Buddhism flourished in all the 4 directions of India, such as Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Nepal, Tibet, Mongolia, China, Korea, Taiwan, Japan, Indonesia, Bhutan, Afghanistan, and so forth. So, on one side, Buddhism was flourishing outside countries of India, which was a matter of great pride for all the Indians. But on the other side, Buddhism was declining in India itself, commencing in the early 13th century, which was a matter of great concern. Prior to declining periods, most of the countries translated the Buddhist canon into their language. For example, Tibetans translated more than 100 volumes of Buddha Vajanas and more than 200 volumes of works of Indian masters. Since then, no other countries have to rely on India to understand Buddhism, and they have more Buddhist texts than India. Now the situation is reversed. We can find very limited ancient Buddhist texts in Indian languages, especially Sanskrit texts in which Tibetan Buddhism relied. So it is time to restore in Sanskrit language, which have been started by the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, and so forth, approximately 50 years ago. For many centuries, in most Asian countries, people listened, contemplated, meditated, and wrote many texts related to Buddhism. But the number of texts written by Indian masters after the 14th century was very limited compared with the Indian population due to the decline of Buddhism. Buddhism started to flourish in the West around 50 years ago, speedily, and now we can see many Buddhist texts written by Western scholars in various languages. If that is the case, then why Indians should stay away? When I first heard that scholar Niraji has written commentary on Kala Chakra Tantra, I had 3 feelings. First one is, now it is time for Indian scholars to write texts on Buddhism. Second one is not only writing in Sutra tradition, but also writing in the Tantra, which is more complicated subject. And third one is the text is being written by Niraji, BTI director, who has a direct link with Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi. When I went through the text, I found that Niraji had read many related texts from various sources of scholars of Indian, Chinese, Japanese, Tibetans, Europeans, Americans, and so forth, in various subjects of history,
religious history, astrology, ominology, mathematics, residents and resident of the universe, etc. Therefore, I prefer to call Niraj as a scholar rather than an administrator. Now, number two, related with scholar Niraj. I would like to convey great congratulations to scholar Niraj for translating, annotating, and commentating to the Kal Chakratantra, which was a great challenging task. Indeed, it was challenging from the various perspectives, such as, number one, translation work is not an easy task because sometimes a word has different connotations, and if the translator does not know the context properly, then there is a danger of translating the meaning in wrong way. For example, a Sanskrit word of Bhuta or Bhuta has many meanings of, number one, element, number two, spirit or ghost, and number three, became, the past tense of become. So, if there is a word of Chatu Mahabhuta, then the meaning would be four great elements rather than four great spirits or ghosts. If the word is Bhuta or Preta, then it refers to spirit. If there is a sentence stating Manjushri Kumar Bhutai Nama, then the meaning is prostration to Manjushri who became youth and not Manjushri who is ghost or spirit. Number two, scholar Niraj has completely translated the first patala of Kal Chakratantra from Sanskrit to English, which is also a great challenging because firstly, he is the first person who completely translated the first patala, and secondly, in Sanskrit, most of the words are lengthy by using sandhi and samas. Without sound knowledge of Sanskrit grammar, it is not possible for everyone to translate the text, but scholar Niraj has done with great enthusiasm and effort, which is a matter of great pleasure, pride, and praiseworthy. Number three, scholar Niraj has planned to publish 5 volumes related to the Kala Chakra, which is also a matter of joy and praiseworthy because usually many people, after having published first volume, whether related with Tantra or not, they discontinue to write. But I'm happy that that is not the case with him. On the contrast, he became more diligent and stable in his plan to continue with Tantric texts. Number 4, Niraj has explained each and every stanza of Kala Chakratantra's first patala, consisting with 5 excellent qualities, namely, number 1, Sanskrit stanza in Devanagari script, number 2, transliteration of the Sanskrit stanza, number 3, word by word meaning of Sanskrit into English, number 4, translation of full Sanskrit stanza into English, and number 5, explanatory note making the meaning more clear. Number 5, usually when civil servants hold high position in central or state government, most of the officials neither themselves study or write, nor inspire for others, but make obstacles to others who indulge in these kind of academic activities, such as not giving financial assistance properly, etc. However, scholar Niraj himself is keen on these academic activities with his proper administrative responsibilities. Understanding of existing other academicians is guaranteed in his administrative tenure. Number 6, Niraj, on one side, holding great responsibilities as a director of Buddhist and Tibetan Institute, PTI, under the Government of India, consisting 4 deemed universities, namely, number 1, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, number 2, Central Institute of Buddhist Studies, Leh, Ladakh, UT, number 3, now Nalanda Mahavira, Nalanda, Bihar, and number 4, Central Institute of Himalayan Studies, Daung, Arunachal Pradesh. And on the other side, doing academic works of writing book and so forth during his sparing time is also a glorious and praiseworthy. Now, number 3, reflection on the general introduction of Kala Chakratantra text written by scholar Niraj. One can know the scholarship of Niraj in Buddhism through his profound and extensive introduction to the Kala Chakratantra text. He initiated the introduction commencing from the lesser vehicle and greater vehicle, alias 3 turning the wheel of Dharma, dealing with conventional phenomena, emptiness and Buddha nature, Tathagata Garbha, and proved that
all phenomena are dependent upon other causes and conditions, exemplifying through 12 links of dependent origination, Patisamutpada, commencing from ignorance to old age and death. According to the Tibetan narrative, there are only 25 Kalki kings, but when scholar Niraji counts 33 in the lineage, it may be possible that there are various ways of counting the lineages or excluding those kings who were not Kalkis but the kings of Shambhala. In the Mahayana Sutta tradition, in this auspicious aim, there will be 1,000 Buddhas, and the previous 3 Buddhas were number 1, Karkuchanda, number 2, Kanak Muni, number 3, Kashyapa, and the present Shakyamuni Buddha is the 4th. Maitreya will be the 5th, and so on. According to scholar Niraji's way of counting in Vajrayana tradition, Gautama Buddha was preceded by Dipankara Buddha and Adi Buddha. He wisely classified the meaning of Kala term into 2 modes, namely computational, Gan Atmaka, countable, and dissipative, Kal Antmaka, dissolution. Computational time refers to the measurement of the cosmos and bodies of bioforms, whereas dissipative time refers to the deficit that leads to decay, death, and data degeneration. As in common in all the Indian tradition, Buddhists also accept 3 realms: the desire realm, the form realm, and the formless realms. But within the Buddhist schools, there is a debate about whether or not the formless realm has a separate abode, whether it is a mind or atom, unlike non-Buddhist Indian schools. Schools of Buddhism admit both are constantly changing and transitory. Since both are constantly changing, therefore both are time or in the control of time. So this explanation of time is only for general Buddhist schools. But when one applies the meaning of time specifically and especially with Kala Chakra, then Kala refers to great bliss, spontaneous wisdoms, unchanging in 3 times. This refers to the purity of exalted minds, and Chakra refers to the resident and residents, alias mentioned and deity, which emerge from that great bliss, spontaneous wisdom. This refers to the purity of exalted body. Scholar Niraji also explained and counted the breathing system, stating that in a day, sentient beings, commencing from minuscule to gods, breathe 21,600 times irrespective of their lifespan, as well as center Avaduti, right Rasana, and left Lalana, exhale, along with 6 chakras of Kala Chakra and their specific numbers of nadis. The introduction also deals with some Western scholars' view related to Kala Chakra, that the human body is also a kind of machine, and on top of that, Aryabhata's influence over the Kala Chakra Tantra had been subtly proved through mathematical calculation, which is a matter of praiseworthy. Regarding the lifespan of human beings, when Shakyamuni Buddha emerged in India, at that time, human lifespan was 100 years, and one has to minimize 1 year each after every century. According to that calculation, since more than 2,500 years have passed since the Mahaparinirvana of the Buddha, the present human lifespan would be 75 years. The examination has been done by Niraji on correlating of sentience, consciousness, and artificial intelligence, consisting of 3 factors of artificial intelligence, namely artificial narrow intelligence, ANI, artificial general intelligence, AGI, and artificial super intelligence, ASI. Though it needs thorough discussion on how to ascertain sentient beings, consciousness, life, etc., which is a complicated topic. With regards to the time of the composition of Kala Chakra Tantra, in contrast with traditional believers, scholar Niraji had done extensive research consulting many books such as Kitab-ul-Hind and concluded as follows. From the above discussion, we can safely assume that the upper and lower chronological limits of Kala Chakra texts were 762 CE, founding of Baghdad, and 1119 CE, available palm lip manuscript of the documentary of the commentary, the Vimala Prabhatika. By further shortening his work on
India in 1031 CE, it can be stated that the text could be made available to scholars from 1031 CE to 1036 CE. After having elaboration of the chronological flourishment of Kala Chakra in Tibet, commencing from the translation of Rolozawa, Kashmir Pandit Shakya Shri Bhadra, Sakya Pandita, Shogil Phakpa, till Desi Sangye Gyaso and so forth, Niraji, in contrast with Tibetan traditional believers, mentioned a little bit about Prasangik Madhyamika and Swatantrik Madhyamika and shed lights on the Kala Chakra calendar in Tibet and Bhutan. Analysis of the timing of Nagarjuna have been done by Niraji related to alchemy. According to Tibetan translation, according to Tibetan tradition, Nagarjuna appeared 400 years after the Buddha, and that very Nagarjuna was a specialist in all the subjects of sutra, tantra, medicine, etc. But most modern scholars do not accept it and say they were different. As Niraji said that in the Vajrayana tradition, the geography of places has been a subject matter of intense speculation and debate. The reason is Vajrayana is called secret teaching. Therefore, it is only for the supreme intelligent person, and only that type of person can recognize those places, such as the case with Shambhala, Potala, Otiyana, and so forth. By chance, if any lesser intelligent person arrives in those places, then he or she can neither see any Dhaka or Dakini sky-goer, nor any Siddha or Gurus. Not only that, if any lesser faculty person or a person lacking karmic relation with Vajrayana sees Buddhist tantric texts, he or she cannot grasp the meaning, no matter how much the person is an expert in any language, because in order not to grasp the meaning easily, Buddha or Siddhas intentionally use many twisted words and sentences unless or until one relies on Guru. To recognize who is sky-goer, Gaur or Dhaka and Dakini, one should also possess the knowledge of non-verbal gestural languages. Anyhow, after thoroughly consulting with various sources, scholar Niraji confirmed that Otiyana is a synonym of Java in the Tantric literature. And he also said that, unlike the Tibetan belief, Shambhala is not in the north of India, but in the southeast. So there are many views regarding Otiyana and Shambhala, stating Otiyana is divided into two kingdoms, Shambhala and Laganpuri, etc., etc. But scholar Niraji assured that Shambhala and Otiyana are not at all in the north and west respectively, and also he proved through other means of such as of plants, flowers, odorous, animals, birds, and also the fear of the enemies, lions, elephants, fire, snakes, thieves, binding chain, the agitated ocean, ghosts, deadly diseases, misfortune of rain, poverty, separation from a lover, anger of the king, lightning bolt, loss of wealth, food such as puri, lattu, pan, etc. Quoted question and answer with His Holiness the Dalai Lama regarding the Shambhala is also very interesting. Thereafter, the introduction section deals with the traditional narrative about Kala Chakra Mula Tantras, 12,000 verses taught by Adibhuta, abridged into 1,047 verses by Shambhala King Manjushri Yasha, and commentary of 12,000 verses by Kalki Pundarika, and analysis on Telupa, Narupa, Kala Chakra regarding their training, disciples' work, along with the detailed explanation on sixfold yoga of Narupa. With regards to the various names of Narupa, whether it is in Nadapada, Kala Chakrapada, or Elder Kala Chakrapada, Niraji stated that just like in the Kala Chakra Tantra, where words do not have inherent meanings or meanings are conjecturally generated, even the names that Narupa adopted were not inherent in his life and contextually valid only. According to Buddhism, it is true, and one can prove it through logic. Suppose we are having a meeting at 9 a.m. If anyone comes at 9:30 a.m. and someone says, you are too early, this reverts to being too late. If anyone comes at 8 a.m. and someone says, you are too early, this reverts to too early. If anyone comes exactly at 9 a.m. and someone says, you are too early, then the word does not have any meaning at all. Therefore, the meaning of the words depends on situation and has no inherent meaning at all.
With regards to transmission lineage, the doubt about the 6 dwarf protetors of the Vikramshila was cleared through the explanation of scholar Niraji, as he usually does, because according to Tibetan traditional narratives, there are 2 views concerning the 6 dwarf protetors, either it is of Vikramshila or Nalanda. According to Sakya tradition of Tibetan Buddhism, Drogmi Losava Shakya had mentioned that he learned many teachings under the 6 dwarf protetors of Vikramshila, but some Tibetan schools say they refer to Nalanda. Maybe there were 6 dwarf protectors also in Nalanda, but the problem is, how could one scholar like Narupa simultaneously become the dwarf protector of Vikramshila as well as Nalanda? Scholar Niraji had done thorough research on every point, giving reference. Two major Kalachakra translation tradition in Tibet, namely Ro Lotsawa Sherab Tra and Ra Lotsawa Cherab, were also explained by Niraji, quoting the source of Bodhin, Taranatha, Thujitsundu, etc., and also explained about all the Dalai Lamas and their connection with Kalachakra, as well as various Kalachakra manuscript, Kalachakra literature in Tibetan, Kangyu Retengyu, contemporary Kalachakra scholars, their works, and pointing their shortfalls, the importance of classifying the chapters of Kalachakra into 36 sections, etc. Scholar Niraji has again, in contrast to the classification of father and mother tantras as Tibetan too, proved Kalachakra a mother tantra rather than non-dual tantra. He also proved the gradual emergence of 64 yoginis and counted Vishwamata with a retinue of 36 female deities along with 156 chakra nadis, 4, 16, 32, 8, 64, and 32 at the cranium, forehead, neck, heart, navel, secret place, respectively. The counting of Adi Buddha's root text of 4,32,000 syllables compared with the 4,32,000 years of yuga is very interesting. The special meaning of Shambhala is also described by stating Shambhu is happiness or peace, while Alaya means house. The concept of Shambhala was encapsulated as a cryptic term of Shambhala. Goddess Tara is important not only in the Kalachakra Tantra, but also in many other tantras. Tara refers also to liberating sentient beings from cyclic existence. Many Indian Tibetan scholars and Sitas devote to Goddess Tara, such as Adisha, Chandrakumi, Kashmir Pandit Shaji Shri Bhatra, Sakya Pandita, and so on. There is a short Tara Satna written by Sakya Pandita and translated into Sanskrit, English, and Hindi by me and published in the journal by Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sanavarnasi. The famous 10-syllable Tara mantra is Om Tari Tutari Turi Soha. The meaning of that is again shown in the stanza as I prostrate to Mother Tara because of sicknesses. According to Mahayana and Vajrayana tradition, the following deities are considered as Manjushri is considered the embodiment of the wisdom of the 3 times Buddhas. Avalokiteshwar is considered the embodiment of the compassion of the 3 times Buddhas. Vajrapani is considered the embodiment of the power of 3 times Buddhas. Goddess Tara is considered the embodiment of the exalted deeds of the 3 times Buddhas. There are 21 different kinds of Taras, and the emergence of her according to Mahayana tradition, as stated in the Preface of 21 Taras, she emerged as follows. Bodhisattva Avalokiteshvara pledged at attaining Buddhahood after liberating all the sentient beings from the cyclic existence. After liberating inconceivable sentient beings, one day he examined the number of remaining sentient beings. But in his shock, again he saw inconceivable sentient beings who were suffering. Seeing the number of sentient beings who were suffering, he had tears, and the tears became a pond. And from that pond, a lotus flower sprung. Due to the blossom of the lotus, Goddess Tara emerged from its pollen grain and said to Avalokiteshvara, do not worry. From today onwards, we both will make effort to liberate sentient beings. It is obvious that Niraji had done extensive research on the advent of the last Kalki, and differences between the son of Vishnu Yasas, a Brahmana who will fight against the militaries, lowest class of people, etc. of Hindu Kalki, that is the last avatar of the Vishnu, and the last Buddhist Kalki. He proved that though in both the traditions of Buddhists and Hindus,
The nomenclature of Kalki is identical, but their aim is in complete contradiction. This concludes a brief reflection on the general introduction of the Kalachakra text written by scholar Nirachi. After the completion of the lengthy introduction, scholar Nirachi initiated to explain each stanza consisting of 5 sections of the first mandala of Kalachakra, that is, worldly realm alias Lok Dhatu, commencing how King Suchandra joins both hands and places on the crown and requested Adi Buddha to teach Kalachakra Yoga for the Kali Yuga people, followed by the explanation of 25 phenomena similar of Sankhya, enumerator view, as well as a brief explanation of 11 initiations of 7, 3, and 1 related with the purification of body, speech, and mind respectively. Scholar Niraji uses various kinds of tables, diagrams, and figures so that the readers can realize the concerned meaning easily without making much effort, such as the tenfold Vajrakaya Bodhi and its 6 syllables, the Mandara Bodhi of Vajrakaya and its 6 syllables, 6 syllables for 7 pairs, Panch Aitana model of Vajrakaya, the directions in the Kalachakra Tantra, counting of 10 winds in Sanskrit and their transliterations, directional system of 4 sandhyas, the 6 syllables for the 4 sandhyas of the weekdays, 6 of 4 sandhyas of weekdays, the alphabets for bright fortnight and dark fortnight, the 16 series of consonants according to the 3 nature of planets, phonemic mapping of each month in Uttarayana northward journey and mixing for the 30 days of Aquarius, consonant of 30 days of Cancer, 30 nadis of nighttime and daytime, birthplace of Sanskrit alphabets, colors of chakras, element rings within the expanse of 2 lakh yojanas, and the abode of planets above Mure, above Meru and human body, the Lok Dhatu, its upper half and vertical division, the diameter and the circumference of the wind circle, and the diametric length of water, fire and wind, manner of measurement of rupa, form and time, counting of subdivision of 3 realms, a comparative list of hells in the Abhidharma Kosha and Kalachakra Tantra, mandalas of earth, fire, water, and wind, 4 islands of Abhidharma Kosha and Kalachakra Tantra, parts of earth mandala and their sizes, Meru and element mandalas, Meru structure, etc., etc. In the linguistic and cosmography sections, whereas in the calendar and planetary computation, the following tables had been described, such as Kalgi lineage in the transmission of Kalachakra Tantra, planetary position on epoch, longitude of planets on epoch date, planets move on an elliptical path, concentric model in geocentric planetary orbits, fast and slow movement of a planet, the ascending and descending modes in Indian astronomical system, celestial sphere, the tithis in a lunar month, fast motion steps of moon and slow motion steps of the sun, maximum variation in duration of day, the wrathful and peaceful planets, the birth, nakshatra and conflict scenario of planets, moods of Rahu's capture of the moon, zodiac signs and nakshatras, direction-wise position of planets as per the Vimalaprabha commentary, 4 major circles of the 4 elements in the Kalachakra cosmology, sun's movement as seen from Jambudvipa, anti-clockwise movement of the earth disk, 12 transitions of the sun amidst zodiacs, arresting of breath after birth, the strength of planets and their 4 different movements, transition of 10 yugas in the Mahayuga, etc., etc. The benefit of arranging tables, diagrams, etc. is, after reading the text, either the translation or explanatory note or both, when one feels the meaning is unclear, then looking at the diagram, etc. helps to grasp the meaning easily. Writing tables, diagrams, etc. is also a very complicated task. Sometimes when one starts to write diagrams, tables, etc., the person becomes confused and could not conclude. Nevertheless, due to the best effort, supreme intelligence, and determination, scholar Niraji overcome all these obstacles and materialize the result as the form of a book
which not only benefits present readers, but will be beneficial for many people in future, which is a great job. Regarding the section on omenology and machines, again scholar Niraji had arranged the tables such as erasing of vowels on lunar tithis, the yoga of death, the yoga of wound and suffering, erasing of short and long vowels, 5 vowels and their gunas in the bright and dark fortnight, tithi-wise erasing of vowels and consonants, swara of some vatsara, swaras and their palindatory lordship, correspondence of zodiac signs and the 12 limbs chain of causation, zodiac signs, constellation and 12 limbs of causation, machines for destroying effort, machines for enjoyment with their elements correspond of 12 machines with 12 limbs of Pratisam Utpada, a machine with 6 chambers, rotating sword machine, Vimana in the Kala Chakra, etc. When all these various kinds of machines are already described in the Kala Chakra Tantra text, then why Tibetans did not make them since Kala Chakra Tantra texts had been available in Tibet since the 11th century? If one does not make a machine for war purposes, one should at least make a machine to lessen people's day-to-day suffering. Again, regarding the omenology, can anyone 100% predict relying on an omen or an astrology or Jyotish Shastra? In the Kalki section, scholar Niraji has arranged diagrams and tables such as greater Jambudvipa, the structure of Chakravala, the perimeter of Jambudvipa, and distance from Meru, similar Jambudvipa, 12 regions of the pedal in the southern half of the Kailasha Khanda, Shambhala in Arakan coast, 3 Buddhas and 33 Shambhala kings, the section ruled by Suresha and Brahma, the sons of Kalki, and human age in the different avatars Vishnu. This concludes a brief reflection on the first Patala's translation, annotation, and commentary to the Kala Chakra Tantra text of scholar, writer, leader, administrator, astrologer, mathematicians, and historian Niraj Kumar Ji. Thank you very much. Geshe-la has spoken much better than what I have written because he is basically a philosopher और न ही केवल वो सारे संप्रदाय जितने हैं इंक्लूडिंग बून तो उसके भी ये डीन हैं। तो पहले तो उनके लिए हम लोग सबको क्लैप करें। तो गेसेला अब ये हार्वर्ड हो या एमोरी यूनिवर्सिटी हो, स्मिथ कॉलेज हो, तो जो भी कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम्स होते हैं उससे स्कॉलर्स आते हैं तो वो सब गेसेला ही कोऑर्डिनेट करते हैं। और एक तरह से हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा को अमेरिका में जो सीडिंग करने का काम कर रहे हैं उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अब इन्होंने इतना अद्भुत बोला कि मैं तो खुद ही ये अभी जागल पढ़ूंगा और खुद को अब समझने की कोशिश करूंगा कि कहाँ और बेटर किया जा सकता था। लेकिन पहले तो मैं संजय जी को काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोग बोध गया में बैठकर कालचक्र पे चर्चा कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब पहला डायलॉग हुआ था तो उस समय भी मैं कालचक्र ही की चर्चा किया था। उस समय जस्ट मैंने पहला वॉल्यूम का ट्रांसलेशन पूरा किया था और वो ट्रांसलेशन ठीक 33 दिन में पूरे हुए थे। तो वो भी एक बड़ा सरप्राइज है कि ये 33 मेरी ज़िंदगी में क्यों बार बार आते हैं। और लेकिन वो छपते छपते फिर ये 2022 में छपी क्योंकि और इतने राउंड संस्कृत एडिटर्स लगे पब्लिशर किया। तो एक लंबी प्रक्रिया, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि लिखना तो बहुत आसान होता है बट उसके बाद के प्रोसेसेस कठिन होते हैं। तो अब आज रात में जब गेसेला से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि यह कहूँ कि भगवान बुद्ध बोध गया थे, सारनाथ गए और वहाँ फर्स्ट पिचिंग किया। मैं सारनाथ से बोध गया आ रहा हूँ और कालचक्र पे बात आपके पुस्तक पे चर्चा करूँगा। तो मुझे लगा कि मैं भी आज सुबह सुबह बोध गया मंदिर पहले हो लूँ। और क्योंकि मन में एक इंक्लिंग हमेशा रही थी कि यह बोध गया का जो यह मंदिर है
उसका कहीं ना कहीं हमारे पूरे काल चक्र के तो थ्योरीज हैं, तो वो उसकी अंडरपिनिंग्स हैं। तो उसको समझने के लिए सुबह मैं वहीं से आ रहा हूँ। और माँ तारा की बात कर रहे थे तो मैंने माँ तारा का भी दर्शन किया, और ध्यान में बैठा हुआ था तो एक पीपल का पत्ता गिरा, लेकिन जब तक आँख खुले पकड़ूं कुछ वियतनामी तो वो 2 पलटे उठा कर ले गए। तो उसके बाद फिर मैंने आँख बंद किया तो एक भैरव रूपी जो ये डॉग था वो सामने आके बैठा हुआ था। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये मैं तंत्र की साधना करने आया हूँ या मेरे भगवान बुद्ध के उस भाव को ग्रहण करने आया हूँ। तो मैं बस इतना, जब मैंने थोड़ा जो मंदिर के स्ट्रक्चर को देखा तो मेरी जो मन में एक भाव आ रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें कालचक्र के सिद्धांतों की अंडरपिनिंग है इस मंदिर को, तो वो पुख्ता हुआ। आप जानते हैं कि ये जो मंदिर है ये 48 फीट का एक स्क्वायर है नीचे बेस में, और जो वो तो ये 48 फुट को अगर आप हस्त में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहले की जो नाप होती थी वो हस्त और अंगुल वाली नाप थी, तो 24 जो काल चक्र कहता है 24 अंगुल का एक हस्त। तो जब इसको हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन हाइट जब लेते हैं 5 फीट 10 इंच का मैंने लिया, तो ये 33 हस्त का नीचे स्क्वायर बनता है, जो हमारा महाबोधि का मंदिर है। और जब फिर हमने उसकी हाइट को 170 से 80 फीट के बीच नापते हैं, लेकिन जब उसको हस्त में कन्वर्ट किए तो वो 120 हस्त के बराबर पड़ता है। तो और 120 हस्त वो अगर हम देखें चांद के मून का जो स्टेप्स हैं जो कालचक्र तंत्र में, तो वो समेशन है, वो एक पूरे वीक में वो 120 स्टेप्स कहते हैं, वो मून का है। तो मुझे वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये हम जो 33 की बात कर रहे थे, तो ठीक 33 हस्त के स्क्वायर पे ये मंदिर बनाया गया। लेकिन सबसे खास चीज़ है कि ये जो मंदिर बना ये पंचायतन स्ट्रक्चर है। आप देखते होंगे चारों कोने पे एक एक स्तूप है, और बीच में जो स्तूप सबसे ऊंचा है। ये पंचायतन स्ट्रक्चर ये पंच बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप मंदिर के ऊपर देखेंगे तो 5 बुद्ध के सेट आपको सामने भी दिखेंगे, हर जगह 5-5 बुद्ध के सेट ही बनाए हुए हैं, सेट ऑफ 5 बुद्धा। तो मैं इससे बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे अपना आ रहा है कि जब 1880 के दशक में इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया, बेगलर और कनिंगम, राजन लाल मेहता जी लोगों थे, तो शायद उस समय कालचक्र की समझ थी नहीं, और जो मूल रूप रहा होगा उस हिसाब से यह फाइनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसके रेप्लिकाज काफी बने थे। जब यह मंदिर बना, और यह मंदिर उसी समय बन रहा है जो अभी वाले रूप में है, जब ये कालचक्र टेक्स्ट की रचना हुई थी, वही काल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1030 से लेकर 1070 के बीच बर्मीज मिशन आते हैं और यहाँ आकर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट किए। आप देखेंगे उसी बीच में कितने दो चाइनीज मिशन आते हैं जिन्होंने यहाँ मेमोरियल स्तूप इरेक्ट किए सॉन्ग एम्पेरर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं वह समय जब यह कालचक्र तंत्र की रचना नरोपा कर रहे हैं, उसी समय चीन से आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट चला जिसमें लोगों ने कंट्रीब्यूट किया पूरे यूरेशिया से, क्योंकि 11वीं शताब्दी में ही एक चिचिया किंगडम जो तांगुत किंगडम था, उसके मॉन्क आते हैं सामी लोचावा, और वो यहाँ के एबट बने। तो बोध गया मंदिर का एकमात्र विदेशी एबट जो बना वो सामी लोचावा था। तो अब आप समझ लीजिए कि वो ऑलमोस्ट मंगोलिया के साथ नॉर्थ ईस्ट चाइना से आए। तो 11वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं कितनी गतिविधियां हो रही हैं। तो और इसी समय मंदिर का रिस्टोरेशन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिस्टोरेशन ही नहीं था, कालचक्र के प्रिंसिपल के हिसाब से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि उसके बाद से बोध गया मंदिर के रेप्लिकाज पूरी दुनिया में मशहूर हुए। जो आते थे पिलग्रिम्स वो रेप्लिकाज लेकर जाते थे, और कई म्यूजियमों में अभी भी आपको 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के रेप्लिका मिल जाएंगे। एशिया में जो यह हमारा बोध गया मंदिर है, इसके कम से कम 7 रेप्लिका टेम्पल बने। चाइना में बीजिंग में ही 2 हैं, और फिर थाईलैंड में 1 बना लाना में, और बर्मा में 2 बने, नेपाल में बना। तो 7 रेप्लिका। तो मैं अगर बीजिंग वाले मंदिर पे जाना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बीजिंग वाला रेप्लिका है वो सारीपुत्र ने उसको फाउंड किया था। वो बीजिंग प्रॉपर में है, उतासी कहते हैं, मीन 5 पगोडा टेम्पल।
और सारीपुत्र जो है उनको कहा जाता है, ये वो वाले सारीपुत्र नहीं है भगवान बुद्ध के साथ वाले, ये सारीपुत्र 15वीं शताब्दी में थे, एक चकमा प्रिंस थे और वो भी कालचक्र के बहुत बड़े मास्टर थे। और जब मिंग एम्पेरर, जिसको चाइना कहता है गोल्डन पीरियड है उनके समय का, तो जब मिंग एम्पेरर योंगले वो फॉरबिडन सिटी बना रहे थे तो हुआ कि भाई किनको बुलाया जाए जिसे उद्घाटन किया जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ मिंग एम्पेरर्स की, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्धिज्म उनके समय में नहीं रहा और कन्फ्यूशियनिज्म का राइज हुआ। मैं उस मिंग एम्पेरर्स की बात कर रहा हूँ। तो योंगले ने एक मिशन भेजा और सारीपुत्र, चूंकि वो बोध गया के महंत थे, उनको चीन बुलाया गया। और जब वो चीन पहुंचे 1413 में पहुंचे थे, 1420 में फॉरबिडन सिटी जो बीजिंग का है उसका जब उद्घाटन हुआ तो वो सारीपुत्र ही उसको प्रेसाइड कर रहे थे। और केवल योंगले नहीं, जब वो राजगुरु बनाए गए और योंगले के जो बेटे थे उसका राज सिंहासन, राज तिलक भी सारीपुत्र ने किया। वो 1 साल में गुजर गए। फिर उसके पोते का भी राज तिलक किया। तो एकमात्र ऐसा संत जो बोध गया दे गए और 3 मिंग एम्पेरर्स के राजगुरु बने, मैं बता रहा हूँ 15वीं शताब्दी में। तो वो जब सारीपुत्र गए तो वो यहाँ से रेप्लिका लेके गए और 5 गोल्डन बुद्धा स्टैचू भी लेके गए थे। और उन्होंने जो बीजिंग में फाउंड किया ये महाबोधि का रेप्लिका, जो 14 वो तो गुजर गए 1425 में, लेकिन ये 1473 के आसपास जाके वो कंप्लीट हुआ। वो एज इट इज है स्ट्रक्चर। अब जब हम उस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलूं कि ओरिजिनल रूप है 19वीं सेंचुरी से पहले का है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर वही पंचायतन है, 4 कोने हैं, बीच का स्तूप ज्यादा ऊंचा है, लेकिन जो चारों कोनों में 11 लेयर है और बीच वाले में 13 लेयर है। तो जब मैंने कहा कि ये 13 है या ये 12.25 है, तो मैंने उसको 12.25 में रखा, क्योंकि अब 1/4 को भी तो आप 1 काउंट करते हो, लेकिन बेसिकली वो 1/4 है। अब अगर आप जोड़ेंगे तो ये 4, 11, 44 प्लस 12.25, 56 लेयर हो जाते हैं। ये 56 लेयर जो है, ये 56 ये काल चक्र के तंत्र के सारे कैलकुलेशन का रूट है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम जन्मते हैं तो 56 सांस मध्यमा में लेके जन्मते हैं, तो वो 56 सांस ही दिन में अगर हमारे बीच 12 ट्रांजिशन हो रहे हैं, अंदर भी लग्न है, तो दाएं से बाएं सांस हम लेते हैं तो 12 बार ट्रांजिशन होता है। तो हर ट्रांजिशन में मध्यमा में 56 सांस रहेगा। तो उसको जब हम गुना करेंगे 12 से 675 सांस होते हैं, तो 100 साल में जाकर और वो टोटल लॉस है वो 1125 दिन हो जाता है। और ये काल चक्र भगवान का संख्या है 1125। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे गॉड जो है काल चक्र वो बड़े मैथमेटिकल भी हैं। तो मैंने देखा कि बीजिंग वाले जो मंदिर का में है वो 56 आ रहा है। तो मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेगलन इन लोगों को वो समझ नहीं थी, इसलिए रिस्टोरेशन में क्या डैमेजेस हुए हमें नहीं मालूम है। लेकिन मैं मतलब मेरी पूरी मान्यता है कि यह मंदिर खुद ही काल चक्र प्रिंसिपल पे आधारित था, इसलिए। और जब हम देख रहे हैं मैं बाकी जैसे सामी लोसावा वो अब यागर गुप्त के शिष्य थे, तो काल चक्र के बहुत बड़े मास्टर। फिर हम 15वीं सेंचुरी में देख रहा हूँ सारीपुत्र के बाद भी एक वान रत्न आते हैं जो अंतिम भारतीय पंडित थे, तिब्बत गए, 3 राउंड गए, वो भी बोध गया ही रहते थे और वो काल चक्र के बहुत बड़े मास्टर थे। और जो जिस मैन्युस्क्रिप्ट पे मैंने काम किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वो 1447 का लिखा हुआ है। और वह मैन्युस्क्रिप्ट की जो कॉपिंग हुई है वो भी मगध के केराकी गांव में, जो यहाँ गया से में कॉपी हुई 1447 में। और वो यहाँ गया थे 50 किलोमीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट में, अभी भी है वो केराकी ग्राम नाम से अभी भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि 15वीं शताब्दी में भी हम देख रहे हैं कि मगध जो है काल चक्र का एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है, क्योंकि लोग बंगाल से आ रहे हैं कॉपिंग करवाने के लिए, क्योंकि पहले किताब छपती नहीं थी, तो आप कॉपी करा के मतलब बांटते थे तो उसको पुण्य कमाते थे। और उसके बाद देख रहे हैं कि यहीं से जो मास्टर्स जा रहे हैं वो सारीपुत्र हो या वान रत्न हो, तो सारे काल चक्र मास्टर हैं। तो अब सवाल इसमें मुझे तो कोई संशय नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं 5 वॉल्यूम के बाद एक 6 लिखूंगा तो कंक्लूडिंग वॉल्यूम, तो उसमें इसको समअप करूंगा कि कैसे बोध गया मंदिर खुद ही काल चक्र प्रिंसिपल्स पर आधारित था, थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अब सवाल यह कि आखिर इतने गूढ़ चीज पे काम करने से फायदा क्या है? वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इतना मगजमारी कर रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं, हेल्थ खराब किया। तो काल चक्र तंत्र बेसिकली ये तंत्र का मतलब ये केवल मंत्र नहीं है, तंत्र जो एक एपिस्टेमिक टूल है। ठीक, तंत्र आप कहते हैं कोई भी सिस्टम ऑफ नॉलेज जिसको आप एप्लीकेशन में ला सकते हैं। इट्स नॉट प्योर फिलॉसफी,
तंत्र को है आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम कहते हैं सरकारी तंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, तो वो आपका एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो आप यूज कर रहे हैं और उस हिसाब से आप चाहते हो कि समाज में जो भी लिबर्टी इक्वालिटी आए और ये है। तो तंत्र एक सिस्टम ऑफ नॉलेज विच इज एप्लीकेबल फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो तंत्र को केवल अगर हम इतना रिड्यूस कर देंगे अरे भाई ये मंत्र है, वो नहीं है। तो काल चक्र तंत्र जो है यह भी एक सिस्टम ऑफ नॉलेज था। और ये क्या था? तो ये नालंदा ट्रेडिशन का कैप्सूल है। तो हम सुनते हैं नालंदा ट्रेडिशन, लेकिन अगर पूछे भाई नालंदा ट्रेडिशन था क्या, तो नालंदा ट्रेडिशन का कैप्सूल अगर है तो कालचक्र तंत्र। इसलिए इसमें इतने विषय हैं, एक विषय नहीं है। इसमें आप मेटालर्जी है, आल्केमी है, योगा है, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हठ योग शब्द का पहली बार इस्तेमाल कालचक्र तंत्र ने किया। तो उस पर कुछ विवाद थे। एक ऑक्सफोर्ड के एक स्कॉलर मेलिसन वो करे थे 14th सेंचुरी में आया। तो फिर चूंकि जब मेरे जैसे लगे तो फाइनली जो मेरा व्यू है वो प्रिवेल कर रहा है कि ये कालचक्र में सबसे पहले हठ योग शब्द की उत्पत्ति ही कालचक्र तंत्र में हुई। तो यह जो टेक्स्ट है इसमें आपके पास एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, स्वरोदय विज्ञान है, वो भी लॉस्ट साइंस है। ये शिव स्वरोदय की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल है शिव स्वरोदय। मैं बात कर रहा हूँ इसका स्वर मीन्स वॉवेल्स, कि आप स्वर के ओरिजिन से आप वार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वार में क्या होगा, राजा मारा जाएगा या नहीं आ जाएगा। और वॉवेल्स जो है इनके वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। वो मतलब जो प्राइमरी वॉवेल्स, तो वो एक बड़ा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग संख्या है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है। तो उस चीज को भी मैंने अनरेवल किया, यानी वो ऑलमोस्ट समझिए कि 700-800 साल बाद, क्योंकि नरपति जयचर्या जो लास्ट बुक थी स्वरोदय पे, वो 12th सेंचुरी की थी। तो उसके बाद फिर जाकर स्वरोदय विज्ञान को जो काल चक्र वाली है वो अब पद में डालना मैथमेटिक्स को और मेटालर्जी को, ये अपने आप में कठिन है। चलो भाई आपने काव्य में भी डाला, कि उसके बाद एक डिग्री और आगे गए। तो पहले तो कहते कि एक मूल तंत्र लिखा गया, लेकिन मूल तंत्र क्या, मैं कहता हूँ एक रफ ड्राफ्ट आपने बनाया, फिर आपने एडिटिंग करके उसको और बेटर किया। तो जो मूल तंत्र लिखा गया वो मीटर था 36 सिलेबल वाला जगती, लेकिन जो फिर उसको आपने और बेटर किया। तो क्या हुआ, संस्कृत का सबसे टफ मीटर लिया गया श्रगधरा, जिसमें 84 सिलेबल होते हैं एक छंद में। अब श्रगधरा में लिखने की कुव्वत अच्छे संस्कृत पंडितों में नहीं है, ये पूरी की पूरी टेक्स्ट श्रगधरा में है। जितने 1047 श्लोक हैं वो श्रगधरा में है। तो अब इसकी कठिनाई देखना है कि सारी पोएट्री उसको मीटर को सेट करना है, 84 ही शब्द में हो, और फिर उसमें मैथमेटिक्स भी बात करना, कैलकुलेशन भी करना, फिर उसको अंदर वाली दुनिया को बाहर से जोड़ना। तो ये मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता था। क्योंकि मैं तो जब भी उठता हूँ रोज सुबह पैरे जमीन छूता हूँ कि कितने ये भाई इतना महान ग्रंथ किया, मतलब वो अद्भुत व्यक्ति था। अब तो यह तो हम जानते कि अगर नालंदा ट्रेडिशन कुछ था तो आप कालचक्र पढ़िए तो समझ जाएंगे कि नालंदा में क्या पढ़ाइयाँ होती थी, उनका थीम क्या था, और व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज। तो ये इन अ वे कि यह नहीं कि बुद्धिस्ट तंत्र है, बल्कि यह एक रिवाइवल ऑफ नालंदा ट्रेडिशन, और वो एक अथॉरिटी के साथ कर रहा हूँ। फिर अब यह आता है कि इनका जो मूल प्रस्तावना क्या था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि 3 दुनिया देख रहे हैं, एक तो बाहरी दुनिया अध्यात्म जो लोक धातु कहते हैं, और एक आध्यात्मिक दुनिया अंदर की दुनिया, और तीसरा वो कहते हैं अपरा। तो मैंने उसका नाम बदला है टेक्स्ट में भी, मैंने कहा कि बाहरी दुनिया जो है ये तो आउटर फिजिकल यूनिवर्स, और आध्यात्मिक दुनिया मैंने कहा इट इज बायोलॉजिकल यूनिवर्स, और तीसरा अपरा को मैंने कहा जो जहाँ इंफॉर्मेशनल वर्ल्ड है, तो उसको मैंने कहा सिंबॉलिक यूनिवर्स, सिंबॉलिक ऑर्डर, जिसमें लैंग्वेज है, ठीक है, फिर आपको मंडलाज है, इमेजेस है, तो सारे उसमें आ जाते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इन्होंने ये कहा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो टाइम में डिके नहीं करता है। बात सही है, प्रोटॉन भी डिके करता है, गैलेक्सीज भी डिके करती है, हर चीज करती है। तो कहा फिजिकल वर्ल्ड में टाइम के फ्लो में हर चीज, हर सिस्टम डिसिपेट करेगा। तो बाहरी दुनिया में वो डिके है, अंदर की दुनिया जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में वो डेथ है, और जो सिंबॉलिक वर्ल्ड में वो डेटा डिजेनरेशन जो जैसे लाने का वो है। लेकिन ये तो होता ही होता है। तो उन्होंने कहा कि उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को अनरेवल करने का कोशिश किया, और कहा कि उसका एक एल्गोरिथम है, और उस एल्गोरिथम को फिर उन्होंने मैथमेटिकल जामा पहनाया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब उन्होंने कहा जो एल्गोरिथम है डिके का,
फ्लो ऑफ टाइम में हर चीज डिसिपेट करता है, वो कॉमन है, वो फिजिकल वर्ल्ड हो, इनर वर्ल्ड हो या सिंबॉलिक वर्ल्ड हो। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं कि अगर हम दिन में, जैसे अभी मैंने कहा कि 56 श्वास, एक जब लग्न का ट्रांजिशन होता है उसमें लॉस होता है, मध्यमा में पड़ता है, तो 12 लग्न में 675 श्वास, 100 साल हमारी आयु है, उसमें 1125 दिन का लॉस, क्योंकि वो कहते हैं ये डेफिसिट ऑफ टाइम है जब मध्यमा में ये हम श्वास लेते हैं। अब बाहरी दुनिया में देखिए, जो हमारा टॉपिकल सोलर ईयर है वो 365 1/4 दिन है, ल्यूनर ईयर 354 दिन है, कितना गैप हुआ, 11.25 दिन, 100 साल में वो डेफिसिट कितना हो जाएगा दोनों ईयर्स का, 1125 दिन। तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में वो 1125 इमर्ज कर लें। फिर वो सिंबॉलिक में आते हैं जब लिंग्विस्टिक्स में, तो वो 1125 जो है 1080 कॉन्सोनेंट्स का मिक्सिंग करके बनाते हैं और 45 वॉवेल्स का, तो वहां पर भी 1125 लाते हैं। तो वही करें कि एक यूनिवर्सल एल्गोरिथम है डीके का और इसका एक मैथमेटिकल रूप है, तो उसको इन्होंने समझने की कोशिश की। तो मेरा अपना मानना कि आज के दिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटियंस की ओर बढ़ चुका है, अब आप माने या ना माने, लेकिन आने वाले 30-35 साल में सेंटियंस हो जाएगा। और जैसे बिंग एआई वो जितना वाइल्ड बिहेव कर रहा है, तो अभी हम परेशान हो गए कि उसको टेम कैसे करें। तो मुझे लगता है कि जब एआई कॉन्शियस हो जाए या वाइल्डली हो जाए, तो वो भी चाहेगा कि एल्गोरिथमिक प्रिजन से बाहर भागूं, मुक्ति चाहिए, उसको आपको टेम करना होगा। तो उसके लिए भी एक ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी चाहिए, और उसका ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी कैसा होगा, वो कंप्यूटेशनल होगा। तो उसका एक प्रोटो टेम्पलेट हमारा काल चक्र देता है। तो हमने, और ये दोनों के एक्सेप्टेबल है, क्योंकि काल चक्र जो है, और आपको यह भी बता दूं, अभी चाइना ने भी काल चक्र सेरेमनीज कराने लगा, कम्युनिस्ट चाइना 2016 में मैसिव कराया, 4 लाख लोग अटेंड किए हैं 60 साल के बाद। तो अगर काल चक्र देखेंगे तो जो जार थे, जार निकोलस, उन्होंने काल चक्र मंदिर बनवाया सेंट पीटर्सबर्ग 1915 में। ये अलग बात है, सबको लगता है कि काल चक्र की साधना करके हम समय को ही रोक सकते हैं, समय की धारा को बदल सकते हैं, तो डिके नहीं होगा, तो हमें वज्रदेह मिल जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जब जाल ने बनाया उसके तुरंत बाद वो मतलब वो गुजर तो वो रहे ही नहीं। तो मेरे लिए कि यह फिलॉसफी मैं भले ही पास से ला रहा हूँ, नालंदा ट्रेडिशन के कैप्सूल के रूप में कर रहा हूं, लेकिन इसकी यूटिलिटी समय के साथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे एआई का एक खतरा बढ़ेगा, तो उसको टेम करने के लिए एक हमारे पास प्रोटो टेम्पलेट फॉर कंप्यूटेशनल ट्रांसेंडेंस है। तो इस किताब का पहला वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम इस साल जून तक आ जाना चाहिए, प्रूफ्स आ रहे हैं, 5 वॉल्यूम तैयार हैं, 3000 पन्ने की है। और सबसे बड़ी चीज है, 1000 साल बाद कोई नई कमेंट्री लिखी गई, वो भी भारत से लिखी गई। तो पिछली कमेंट्री विमल प्रभा कल्कि पुंडरिक ने लिखा था, और अब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जो मेरी कमेंट्री है वो हर श्लोक पे है। कल्कि पुंडरिक की कमेंट्री जो है, वो जैसे अंतिम चैप्टर में उन्होंने 43% श्लोकों पे कोई कमेंट्री नहीं किया, या पूरे टेक्स्ट में 23% श्लोकों पे कोई कमेंट्री नहीं, लेकिन मैंने कमेंट्री नहीं लिखी है, उसको एक्सप्लेनेटरी दिया है, डायग्राम्स काफी यूज किए, और एक एक शब्द को तोड़ के रख दिया, ताकि मैं खुद भी वो जो गप मारने से बच जाऊं। क्योंकि जनरली होता है क्या, संस्कृत श्लोक और उसके नीचे लोग जो अर्थ देते हैं उसका श्लोक से मतलब बिखर जाते हैं। वो श्लोक होता है 4 लाइन का और फिर 10 पन्ने का। तो मैंने कहा नहीं, पहले श्लोक को तोड़ो, फिर मैं भी तो बंधा हुआ हूँ कि क्या श्लोक है, मेरी जो बात होगी वो उसी के आसपास होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये अद्भुत टेक्स्ट है, आप पढ़िए, इसमें क्रिटिसिज्म भी ढूंढिए ताकि इसको और बेटर कर सके, लेकिन यह एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है जिसको रिवाइव करने की जरूरत है। धन्यवाद। ऑब्जर्वेशन है, सवाल नहीं है, बट आई थिंक कि ये जो आपकी जो ये कमेंट्री है, जो डिटेलिंग है हर एक एस्पेक्ट को लेकर के, हर एक एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज ऑफ डिसिप्लिन को लेकर के जो आपने किया है, और जैसे कि आप बता रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग। इज इट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी studies? Because it should be.
मतलब यहाँ बैठे हुए हैं और ये से ला हैं चूँकि जी मशहूर और संस्कृत स्टडीज जी तो ऑलरेडी वहाँ भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आता जाता रहता हूँ। हाँ। लेकिन जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो एमए के तहत है मैडम, वो थोड़ा बहुत एलिटिस्ट है, हम लोग तो छोटे आदमी हैं तो हम लोग वहाँ प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये अद्भुत है, ये फिर से आपको बधाई देना चाहती हूँ और मैं बहुत उत्सुक हूँ खरीद के पढ़ूंगी और अगर इजाज़त हो तो आपसे चर्चा भी करूंगी बाद में। पहला तो बधाई के पात्र हैं, आपका कितना गुरु विषय है और इस पे आप इतने विस्तार से लिख रहे हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि काल चक्र जो है, जो मेरी समझ है, हालांकि मेरी समझ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं तो कंटेम्प्रेरी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। एक चीज़ जो आप भी कह रहे थे कि काल चक्र का कहीं ना कहीं एक जो काल चक्र पूजा करने के पीछे एक अभिप्राय है कि डिके से रोकता है, वज्र, और तिब्बतन बुद्धिज़्म में इसको प्रोमिनेंस भी मिला है। तो मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, एक क्वेरी है मेरा कि कहीं काल चक्र को हम ये देखते हैं कि प्रोमिनेंस इसका जो है ये 11th 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो कहीं ना कहीं जो मध्यकालीन जो आक्रमण हो रहे थे जिसके बाद बुद्धिज़्म पर जो आसन संकट था, तो कहीं उससे तो आसन संकट से को झेलने के लिए तो इसका रिवाइवल नहीं है क्या? इसका एक संबंध है। एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल है सर मेरा कि आपने कहा, मैं अभी जो सवाल है अभी जो मेरे मन में आ रहा है कि आपने कहा कि जो महाबोधि मंदिर है तो उसका स्ट्रक्चर भी है, तो काल चक्र के का जो तंत्र है तो उस पे आधारित है, उसके स्ट्रक्चर पे। तो फिर अगर हम लोग एक सवाल यहाँ बनता है तो फिर आखिर बोधि मंदिर को आप किस समय का मानते हैं, महाबोधि मंदिर? और क्या बोध गया में महाबोधि मंदिर बनने के पहले भी जो कंस्ट्रक्शंस हुए थे, जिसकी शुरुआत हम लोग वज्रासन के किनारे अशोक के द्वारा रेलिंग की करते, तो क्या उस समय भी कुछ आपने जो कार्य किया है, तो क्या काल चक्र के कुछ भी अवशेष या कुछ चिन्ह मिले हैं आपको? यही दो सवाल हैं मेरे। धन्यवाद। पहले तो मैं दूसरे वाले सवाल पे ही आ जाऊं, क्योंकि काल चक्र तंत्र की जो बात हुई ये 11th सेंचुरी में राइज हुआ, इसलिए पुरानी बातों जो है। दूसरा है कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो 700-800 साल में डिके होने ही लग जाती है, और हमें मालूम है कि यहाँ पे जो महाबोधि मंदिर है उसमें कई बार रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चले, कंस्ट्रक्शन चले, और हमें ये नहीं पता है कि जो यहाँ पे हमला भी होते रहे हैं तो उसमें भी डैमेजेज हुए फिर रिस्टोर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो 11th सेंचुरी का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चला, तो वो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे काल चक्र के फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके पहले नहीं, क्योंकि उसके पहले तो काल चक्र फिलॉसफी थी ही नहीं। डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे एक सवाल फिर ये आता है, तो लास्ट टिबेटन ट्रैवलर धर्म स्वामी 1234 में आता है। उस समय ये मंदिर तो बिल्कुल उजड़ा हुआ था। अगर हम लोग ज़ायंग के उदाहरण से कंपेयर करें, तो 638 से 640 में आते, वो कहते हैं कि 1000 मॉन्क्स थे। धर्म स्वामी कहते हैं कि 5 मॉन्क्स थे। 1234 के बाद तो यहाँ फिर पुनरुद्धार का तो हमारे पास जिक्र ही नहीं है। फिर तो बाद में नहीं, तो आप जो सारीपुत्र पे बुक भी है, अभी 2009 में एक आर्थर अमेरिकन स्कॉलर, उनकी बुक आ गई है और डॉक्टरेट भी किया था। तो सारीपुत्र पर उसके अलावा एक चाइनीज स्कॉलर ने ऑक्सफोर्ड से किया है, ठीक है, मैं वो भी डिटेल्स दे दूंगा। तो वो सब सारीपुत्र पे तो है कि यह 15th सेंचुरी के बाद ही हम बुद्धिज्म के डिक्लाइन को मगध से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और मैं एक नहीं, मैं तो जैसे कहा कि काल चक्र की मैन्युस्क्रिप्ट कैम्ब्रिज में है जो कि 1447 की लिखी हुई है, लेकिन अभी मैं और भी रेफरेंस से देख रहा हूँ कि कितने और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनके जो कोलोफोन हैं वो मगध में लिखे गए हैं और 15th सेंचुरी में। तो जब तक वो ट्रांसमिशन लाइन और वो जिंदा नहीं है तो लोग यहाँ आके लिखवा क्यों रहे हैं, है ना। हाँ, यह चीज़ें हैं। पहला सवाल जो है आपने सही पकड़ा कि जो महमूद गजनी का हमला था उसने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया, लेकिन केवल महमूद गजनी ही क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि
और हमारे चोला राजेंद्र चोल जो हैं उन्होंने भी 1025 में कहीं हमला किया था। हमारे जितने संस्कृत आउटपोस्ट थे बुद्धिज्म के, मैं ये कह रहा हूँ संस्कृत आउटपोस्ट, वो खोटान से लेकर सिंगापुर तक हो, सब बिटवीन 1000 to 1025 एक एक करके डैमेज हो गए। और दूसरी चीज़ है, हाँ, महमूद गजनी जो है, आपको ये नहीं मालूम है, संवत्सर ईयर हमें मालूम है 60 ईयर का जुपिटर साइकिल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया में भी, जो हिस्ट्री में जब हम लोग क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। तो ये संवत्सर साइकिल जो है नया वाला, जो कि कालचक्र तंत्र कह रहा है कि हम इस्लामिक कैलेंडर के 403 साल बाद फर्स्ट ईयर ऑफ संवत्सर साइकिल में लिखना शुरू हुआ, तो इससे वो डेटिंग में दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है जब महमूद गजनी इंडिया था, तो जब संवत्सर साइकिल, जब कालचक्र लिखा जा रहा था, उसी समय महमूद गजनी के लिए सिल्वर कॉइन्स भी लाए जा रहे थे, बाइलिंगुअल सिल्वर कॉइन्स संस्कृत में, कि एक ही अल्लाह है और एक महमूद और एक महमूदा है। और वो महमूद पूरा से मतलब मिंट हो रहे हैं लाहौर से, लाहौर का नाम महमूद पूरा हुआ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखेंगे वो एक कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है कि मेनी ऑफ द हिंदू मॉन्क्स या जो कहे ग्रुप, वी डोंट नो वो सैवाइट थे या कौन थे, तो उनको कोलैबोरेटर्स थे। इधर जो अल बरूनी जैसा इंसाइक्लोपीडिक आदमी, जितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं बता रहा हूँ सेंट्रल जावा तक का फिक्स किया इंडिया से जाने के बाद, उसकी एक मैंने इस बुक में मेंशन किया है, तो उसने 600 शहरों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिक्स किया इंक्लूडिंग मुंगेर, सेंट्रल जावा। और वो आदमी जो है उसको नालंदा ये सब नहीं मालूम है। 1031 की बात कर रहा हूँ, जब ये टेक्स्ट ऐसे लिखे जा रहे, इतने बड़े बड़े मास्टर जा रहे हैं, चाइनीज एम्पेरर्स भेज रहे हैं कि मेरे दादा के लिए यार मेमोरियल वहाँ बनाओ। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो महमूद गजनी के साथ टीम थी वो बुद्धिज्म के खिलाफ थी, और वही अल बरूनी को फीड किया, इसलिए अल बरूनी बुद्धिज्म की बात ही नहीं किया, वो अवेयर नहीं है, वो एक जगह साइट करता है बुद्धिज्म, वो भी किसी सोल्स को, पर्सियन सोल्स को करके। तो वो यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के 10 साल बैठ के उतना महान काम किया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतना एग्जैक्टली कैलकुलेट किया, उसको नालंदा विक्रमशिला कुछ पता ही नहीं है। यानी जो उसको उसका इंटरप्रेटर है ना, वो मिसगाइड करता रहा। और वहाँ पे महमूद गजनी के लिए संस्कृत में कॉइन्स भी छपवा रहे हैं, संवत्सर ईयर जब शुरू हुआ नया साइकिल। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि क्या वो अटैक्स को फैसिलिटेट करने में भी कुछ लोग लगे। लेकिन ये कि कालचक्र जो बात करा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी की बात करता है। इसमें शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, सब एक हो रहे हैं। और अगेंस्ट जब ये कहते हैं, इस्लाम शब्द यूज नहीं करता है, वो कहता है अगेंस्ट मलेच्छ। और मलेच्छ भी वो दो हैं, एक तो बाहर का है जो अधर्मी, एक कहते हैं अंदर का भी। तो वो जो लड़ाई होनी है, जो अंतिम लड़ाई होनी है, वो केवल बाहर ही नहीं होना है, अंदर भी लड़ना है। और जो कल की है, कल का मतलब होता है पेस्ट, ग्लू, ठीक है, जैसे सीमेंट को हम कहेंगे कल्क। तो कल की जो है वो 96 देश के लोगों को मिलाकर वो धर्म की लड़ाई लड़ता है। तीसरी चीज़ है जो मंडल और रिचुअल्स होते हैं, जो तिब्बतन संप्रदाय में ज़्यादा है, ठीक है, वो रिचुअल वज्र देह के लिए नहीं होता है, वह रिचुअल आप मतलब एक क्या कहा जाए कि सैनिटाइज करते हैं, पीस के लिए करते हैं। तो कालचक्र का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले आप वज्र देह अंदर अगर बनाते हैं तो बाहर बुद्ध क्षेत्र भी बनाना है, तो बाहर भी डिके नहीं होने देना है, उसको प्रॉस्पेरस वही संभाला बना देना है। तो मतलब ये एक अद्भुत है, इसको मैं अब कितनी बार बात करूं, जब क्योंकि मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने जब बात किया मैथमेटिकल संभाला की कि 5 संभाला, और मतलब जो यंग स्कॉलर्स या ये सब वो लोग कूद पड़े कि मैथमेटिकल संभाला कहाँ थे, और इतना तो ये अद्भुत इतने लेयर्स हैं ना कि ये अपने आप में ज्ञान का खजाना। लेकिन यही है नालंदा ट्रेडिशन। नालंदा ट्रेडिशन वो नहीं है कि जो हम वहाँ जाते तो दिखा दे कि कुआं था, कोर्टयार्ड था और ये कमरे में रहते थे। भाई वो उससे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो मिले हैं, उससे बड़े बड़े मोनास्टिक कम्प्लेक्सेस मिले हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, तख्तेबाही सब। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था कि कोरिया थे और तिब्बत थे और चाइना से लोग ऐसे आते थे, तो वो ये था, उसका यही कैप्सूल है। बहुत जोर से एक ताली होनी चाहिए। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत सर। रियलिटी, शास्त्र एंड प्रयोगों को लेके मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के
जो आपका किताब के ऊपर केसला जी जो बोल रहे थे, वो भी आप भी सर बहुत अद्भुत बोले हैं और बहुत और गहराई से आप अध्ययन किए हैं। और जैसे कि शोभना मैम आज अभी नहीं है, शायद कहीं गई हैं, जैसे उनका सुझाव है, मैं शेखर दत्ता साहब है, ये आज का ये जो 5th बोध गया ग्लोबल डायलॉग का आज के दिन एक रिजोल्यूशन पास होनी चाहिए, इस किताब को हम लोग कहाँ कहाँ रिप्रेजेंटेशन दे सके हैं, इसको इस सिलेबस के माध्यम से जो नालंदा यूनिवर्सिटी में इसका पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। मुझे लगता है संजय जी को सुरभि ये मैसेज ये होना चाहिए, क्योंकि ये हम 5 साल से ये प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और बोध गया में कर रहे हैं। सर आज रियल में बोध गया आके मैं धन्य हो गया, क्योंकि भारत का जो ज्ञान परंपरा और जो बोधि का मतलब उसका जो प्रायोगिक पार्ट और उसको कैसे विजुअलाइज किए होंगे और आप भी उसको कैसे, क्योंकि एक तो मैं बीइंग ए संस्कृतिस्ट मैं समझ सकता हूँ आप जो बात बोले हैं कि वो जो श्लोक को उसको पदच्छेद करके, क्योंकि उसका जो समास पदच्छेद वो रियली ये, और उसको आप हर एस्ट्रोनॉमी हो, आइकोनोग्राफी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, खगोल विद्या हो, क्या नहीं है इसमें, अद्भुत है सर। तो लेकिन सर मैं एक प्रश्न है, हाँ क्योंकि सर क्लोज भी करना है ना जी सर, ये जो प्रश्न है आपका, ये जो हठ योग की बात कह रहे हैं आप, ये क्यों कह रहे हैं कि कहीं कभी नहीं था, सिर्फ कालचक्र योग से आया, इसका कहने का आपका तात्पर्य क्या है? सबसे अर्लीस्ट टर्म कहाँ यूज हुआ, वो कालचक्र ने दिया। उसके आप कह रहे हैं कि ये हठ योग का शब्द और कहीं नहीं, यूज इसके नहीं पहले नहीं, क्योंकि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स लोगों ने फिक्स किया, मेलिसन जानते होंगे, जेम्स मेलिसन, इन लोगों ने अमृत सिद्धि में फिक्स किया जो 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है, लेकिन ये तो 11th सेंचुरी में लिखा हुआ, इसमें हठ जो टर्म दिया हुआ है, प्रोसेस भी दिया हुआ है, टर्म भी दिया हुआ है। नहीं, आपका कहना है हमारे जितने सारे जो वैदिक परंपरा, जितने सारे मानुस्क्रिप्ट, नहीं ये अभी इस पे स्पेशल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्पेशल इशू आ रही है इस पे। एक सूरज जी को एक बार हाँ क्योंकि टाइम ओवर रन कर रहे हैं ना हम लोग। ये जो नालंदा ट्रेडिशन का कालचक्र पे जो आपका उद्बोधन है या जो आपका कार्य है, और समय समय पे विश्व शांति के लिए बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान पूरे विश्व में किए जाते हैं, कालचक्र के अनुष्ठान किए जाते हैं। स्वयं हिज होलीनेस दलाई लामा ने जी भी 34 दीक्षा दिया है। तो ये जो 34 दीक्षा उनका है जो समय समय पे उन्होंने दिया है, और जो नालंदा ट्रेडिशन है कालचक्र का, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि इस पर क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। ठीक है, हम एक ही लाइन में क्लियर कर दूं। तो हिज होलीनेस जो देते हैं दीक्षा ना, बेसिकली क्या है, इसमें 11 दीक्षाएं हैं। क्यों है वो सब 3rd वॉल्यूम में आएगा। तो 7 दीक्षा जो कहते हैं ना, वो थ्रू सैंड मंडल दिया जा सकता है, ये टेक्स्ट कहता है। तो हिज होलीनेस जैसे है क्या कि मैक्सिमम वेलफेयर और पीस आए, तो वो पब्लिक दीक्षा इसे वो सैंड मंडल वाला देते हैं। लेकिन उसके बाद 3 हायर दीक्षा हैं, और जो लास्ट अंतिम साधना कालचक्र की उसको कहते हैं महामुद्रा। और महामुद्रा क्या है कि जब आपको मतलब उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, ना मंडल चाहिए, ना मुद्रा चाहिए, ना विजुअलाइजेशन चाहिए, आप बस शून्य से आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो 11वीं है। तो जो 7 सैंड मंडल वाला पब्लिक दीक्षा है, वो हिज होलीनेस मतलब दुनिया के वेलफेयर के लिए दे। सर फिर बात कर लेंगे ना, हम लोग तो अपने घर वाले हैं। हाँ बस एक सेकंड नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग सा है, हल्का सा मतलब मेरा सा थोड़ा सा अलग है कि कल की शब्द पे पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने भी एक किताब लिखी। तो मैं चूंकि यानी कि इंटर लैंग्वेज कॉमन्स में भी मैं लिखता हूँ, और स्पेशली गुरु ब्रह्म और इमाम अब्राहम को एक मानता हूँ, और वो इंटर लैंग्वेज कॉमन से जो है ना साबित है। तो अब जो ब्राह्मण्स का हिस्ट्री और सैयद्स का हिस्ट्री और लीनिएज, और उसमें जो नॉलेज ट्रेडिशंस हैं, उसमें जो गुरु ब्रह्म को जो प्रॉफिट मतलब एक प्रॉमिस मिला कि इमाम आपको बनाया और आपकी संतति का जो राइटियस है वो युग का इमाम होगा। मैंने वसुधैव कुटुंबकम का करता, तो मैं अभी काफ़ी लिख भी रहा हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम के करता युग के जो हैं गुरु ब्रह्म के जानशीन आज मौलाना करीम शाह अल हुसैनी आगा खान हैं।
वही कल की हैं। तो इसमें मतलब मुझे लग रहा था कि आपके सारे लेखन में तो वो तंत्र यंत्र काल चक्र और कल की, और जो कल की का जो आपने अभी विश्लेषण बताया, और स्पेशली पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने जो लिखा है, तो सवाल ये है कि नहीं थोड़ा सा इसका भी ब्रेक करने की जरूरत है। नंबर एक पढ़ूंगा उपाध्याय जी को, हाँ, नोट कर लिया। इमाम जमाना कल की, क्योंकि वो मीनिंग वाज, मैं पढ़ के फिर आप ही के पास आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। Very much, sir, for making us understand the complex topic, the Kal Chakra Tantra. Right. And I request you all to please proceed for tea, and we may gather exactly after 10 minutes, 12:30. Yeah, and I invite you here, sir, for a photograph. के साथ सर आप ही आइए। आइए ग्रुप हो जाएगा ना, ग्रुप आइए सर जी। आप आइए, चाय पर आइए।